For decades, India's corporate compliance relied on 29 fragmented statutes. In 2026, the government dismantled this legacy framework, synthesizing it into 4 unified labor codes. At the center of this new legal system is a concept we can call the 2026 employee. Every interaction between a corporation and its workforce is now mapped to a single, unified architecture. The days of maintaining isolated safety registers in physical ledgers and separate payroll logic for different departments are legally obsolete. Instead, the government has deployed a system of predictive digital tracking. Enforcement is now driven by a new authority, the inspector-cum-facilitator, who operates with a compliance-first mandate using continuous data surveillance. To understand how this matrix operates, we have to construct it from first principles. We will break down the 4 pillars: wages, social security, occupational safety, and industrial relations. Applying isolated manual ATAR logic to this interconnected digital model ensures immediate systemic compliance failure across the entire corporate ledger. We start with the first pillar, wages. The code establishes a strict new baseline for total employee remuneration, standardizing what exactly counts as basic pay. If allowances, like HRA or conveyance, exceed half of total compensation, the amount crossing that 50% threshold automatically converts back into basic wages. This spillover inflates baseline calculations for statutory liabilities. Provident fund and gratuity obligations scale up instantly. The government also mandates a strict national floor wage. State minimum wages are legally barred from dropping below the central government baseline, regardless of the geographic area. Operationally, employers must issue prescribed electronic wage slips. If an employee is terminated or resigns, all pending wages must be cleared within exactly 2 working days. Total deductions from an employee's paycheck for advances, accommodations, or other recoveries are strictly capped at a maximum of 50% of their wages. Disciplinary fines are equally constrained. An employer cannot impose a fine exceeding 3% of the wages for a given period, and prior government approval is mandatory. Because of the 50% allowance cap, a minor payroll misclassification immediately creates a quantifiable, highly visible wage default that ripples across the entire organization's tax and liability ledgers. The second pillar, Social Security, drastically expands the digital perimeter of exactly who legally requires a statutory safety net. The code formalizes the fixed-term employment contract model. These workers now have strict statutory parity with permanent staff, guaranteeing them the exact same wages, leave provisions, and proportionate benefits. This timeline comparison shows the critical legal shift for fixed-term employees. While legacy staff require 5 years of continuous service for gratuity, FTE workers reach full eligibility after just 12 months. Furthermore, gig and platform workers are fully integrated into a centralized National Social Security Board framework. To fund this, digital aggregators are legally mandated to contribute a notified percentage of their annual turnover directly into this centralized pool. For traditional establishments, strict thresholds mandate immediate digital registration. The moment you employ 10 workers, you must register for ESIC. At 20 employees, EPFO registration becomes compulsory. Once registered, employers face a zero-delay mandate. The electronic challan-cum-return must be generated and deposited by the 15th of the following month, without exception. Expanding this perimeter ensures that corporate management can no longer use contract terminology to bypass core Social Security contributions. Moving to the physical environment, the third pillar establishes a unified occupational safety and health mandate across factories, mines, and construction sites. Employers are required to conduct baseline pre-employment and annual periodic medical examinations for workers operating in hazardous environments. Standard work operates under strict legal ceilings, a maximum of 8 hours per day and 48 hours per week. This grid visualizes the absolute legal ceiling on overtime. Establishments face a hard lock of 100 hours per quarter, with every hour requiring a mandatory double pay rate and precise documentation. Establishments must dynamically scale their welfare facilities based on worker headcount. Employing 50 women workers immediately triggers the mandate for a prescribed crush facility. At 150 workers, first aid stations become mandated. Reach 250 workers, and standardized canteens become compulsory. Finally, crossing the 500-worker threshold triggers the mandatory appointment of a certified welfare officer.
Safety compliance functions as a dynamically scaling infrastructure, tied directly to real-time headcount data. The final pillar, industrial relations, regulates collective power, dispute resolution, and operational scaling through strict mathematical thresholds. The baseline to register a trade union requires a minimum of 7 workers, or 10% of the active workforce. This gauge tracks representation. If a union secures 51% of verified members, it gains status as the sole negotiating union. If no union commands that majority, a negotiating council is formed by aggregating unions holding between 20 and 49% of membership. Workplace rules are also tied to headcount. Reaching 300 workers triggers the requirement for an establishment to draft and certify its own specific standing orders. Establishments operating below that 300 worker mark automatically fall under the central government's model standing orders. For public utility services, any strike action is prohibited without a mandatory 14-day advance written notice. For facilities employing 100 or more workers, severe constraints apply. Retrenchment or closure cannot be executed without prior permission from the government. In the event of illegal retrenchment, the employer must provide a mandatory financial compensation of 15 days of wages for every completed year of service. Employee relations and corporate restructuring are governed entirely by absolute mathematical thresholds, replacing subjective negotiations with definitive legal metrics. These 4 foundational pillars do not operate in isolation from one another. Together, they form a single interlocking digital data environment. The inspector-cum-facilitator utilizes digital wage slips and the monthly electronic challen filings to autonomously cross-verify compliance across the entire system. The system instantly compares PF deposits against overtime registers and the start dates of fixed-term employment contracts. If a contractor defaults, the system flags the error and co-liability immediately strikes the principal employer, who must cover the default. These digital audit trails leave no room for retroactive adjustments or manual ledger corrections. The record is immediate and permanent. To survive this framework, corporate management must implement continuous quarterly internal HR auditing to catch discrepancies before the portal does. The 2026 labor codes demand a predictive zero-default operational standard. Systemic interconnected digital compliance is the only defense against compounding legal failure. आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल शिफ्ट को समझने जा रहे हैं। भारत का लेबर लॉ फ्रेमवर्क एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जरा सोचिए, 29 अलग-अलग पुराने और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल लॉज अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। इन सभी फ्रैगमेंटेड रूल्स को कंसोलिडेट करके एक स्ट्रीमलाइंड, आसान और यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया है, द ग्रेट यूनिफिकेशन 2026 लेबर कोड्स। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश के पूरे कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल और कंप्लायंस लैंडस्केप को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इज द ऑर्गेनाइजेशन रेडी फॉर द 2026 लेबर कोड्स? ये एक बेहद क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसका सामना हर एचआर लीडर, पेरोल एग्जीक्यूटिव और लीगल प्रोफेशनल को करना ही होगा। नए रूल्स का असर डायरेक्टली हर डिपार्टमेंट पर पड़ने वाला है। क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स और उनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज इस डीप ओवरहॉल के लिए सच में तैयार हैं? यही हम ढूंढने वाले हैं। इस मैसिव लीगल ओवरहॉल से घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सिस्टम को इन 4 आसान पिलर्स में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। पहला, कोड ऑन वेजेस, दूसरा, सोशल सिक्योरिटी, तीसरा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और चौथा पिलर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। शुरुआत करते हैं पिलर 1 से, द कोड ऑन वेजेस। यहां 4 हिस्टोरिकल लॉज को एक सिंगल फ्रेमवर्क में कंसोलिडेट किया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे कानून अब इस नए सिंगल फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। नए रूल बुक के मुताबिक वेजेस की डेफिनेशन अब बिल्कुल क्लियर है। इसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंपोनेंट्स स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड किए गए हैं वो हैं एचआरए, बोनस और कन्वेयंस। ये टेक्निकल डिस्टिंक्शन आगे आने वाले सभी कंप्लायंस कैलकुलेशंस के लिए समझना बेहद जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है सबसे डिसरप्टिव नियम की, द 50% रूल। अगर एक्सक्लूडेड अलाउंसेस जैसे कि एचआरए या कन्वेंस किसी एम्प्लॉय के टोटल रेम्यूनरेशन के 50% यानी 50% को क्रॉस कर जाते हैं तो वो एक्सेस अमाउंट ऑटोमेटिकली वेजेस का हिस्सा मान ली जाएगी। इसका सीधा असर पीएफ और ग्रेच्युटी के कैलकुलेशंस पर पड़ने वाला है। पेरोल टीम्स को इस बाउंड्री को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा।
और हाँ, जब बात एम्प्लॉय एग्जिट की आती है तो पुराने आरामदायक प्रोसेसेस अब हिस्ट्री बन चुके हैं। नए स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे रेजिग्नेशन हो, टर्मिनेशन हो या कंपनी का क्लोजर हो। पेंडिंग वेजेस को सेपरेशन के ठीक 2 वर्किंग डेज के अंदर क्लियर करना अब मैंडेटरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एग्जिट और फाइनल सेटलमेंट प्रोसेसेस को इस स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के हिसाब से अपग्रेड करना ही पड़ेगा। पिलर 1 के कुछ और हाई इंपैक्ट रूल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस जोन में रखा गया है। सेम काम के लिए सेम पे बिल्कुल मैंडेटरी है। दूसरी बात, ओवरटाइम अब नॉर्मल वर्किंग आवर से दुगना यानी मिनिमम 2x रेट पर पे करना जरूरी होगा। और वेज डिडक्शंस किसी भी हाल में टोटल वेजेस के 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं पिलर 2 की तरफ, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। ये सेफ्टी नेट को मॉडर्न वर्कफोर्सेस तक एक्सटेंड करता है। ये सच में एक लैंडमार्क शिफ्ट है। पहली बार सेफ्टी नेट को सिर्फ ट्रेडिशनल परमानेंट वर्कर्स तक सीमित नहीं रखा गया है। कवरेज का दायरा अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी खोल दिया गया है। एग्रीगेटर्स को अब अपने गिग वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। नए जमाने के एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। अब इस मैसिव कंप्लायंस शिफ्ट को देखिए। ग्रेचुइटी के मामले में हमेशा से एक कॉमन रूल रहा है, जहां परमानेंट वर्कर्स को ग्रेचुइटी के लिए आज भी 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करनी होती है, वहीं अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी FTE वर्कर्स को सिर्फ 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद ग्रेचुइटी पाने का हक मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट स्टाफ के बीच पैरिटी लाने का ये एक गेम चेंजर नियम है। मैटरनिटी बेनिफिट्स की इस टाइमलाइन को भी कॉम्प्रिहेंसिवली समझना जरूरी है। प्री डिलीवरी फेज में एडवांस मैटरनिटी पे प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। डिलीवरी होने पर पहले 2 बच्चों के लिए 26 वीक्स की पेड लीव देना कंपलसरी है और पोस्ट डिलीवरी स्टेज में 15 महीने तक हर दिन 2 नर्सिंग ब्रेक्स बिना किसी पे डिडक्शन के अलाउ करनी होंगी। HR प्रोफेशनल्स के लिए इन टाइमलाइंस को फॉलो करना नॉन निगोशिएबल है। अब आते हैं पिलर 3 पर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये फिजिकल और मेडिकल वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तय करता है। इस नए कोड ने 13 पुराने कॉम्प्लेक्स सेफ्टी लॉज को इफेक्टिवली रिप्लेस कर दिया है। अब फैसिलिटी मैनेजर्स स्मूथली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वेलफेयर रिक्वायरमेंट कब ट्रिगर होती है। जब किसी एस्टैब्लिशमेंट में 50 से ज्यादा महिला वर्कर्स होती हैं तो क्रैश मैंडेटरी हो जाता है। 150 वर्कर्स तक फर्स्ट एड बॉक्सेस मेंटेन करने होंगे। 250 वर्कर्स क्रॉस होने पर कैंटीन फैसिलिटी और 500 वर्कर्स होते ही एक हाईली क्वालिफाइड वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है। वर्कप्लेस सेफ्टी को लेकर यह कोड पूरी तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाता है। अगर एस्टैब्लिशमेंट में हैजर्डस वर्क होता है तो वर्कर्स के लिए एनुअल मेडिकल एग्जाम्स मैंडेटरी हैं। इसके अलावा वर्कर और मैनेजमेंट दोनों की रिप्रेजेंटेशन वाली जॉइंट सेफ्टी कमिटीज बनानी होंगी। और एक सबसे खास पॉइंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE ISI या BIS स्टैंडर्ड के होने चाहिए और ये वर्कर्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इनका पैसा वेजेस से बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। सेफ्टी इमरजेंसीज और एक्सीडेंट्स के मामले में अब एक स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल लागू होगा। अगर वर्कप्लेस पर कोई फेटल या सीरियस एक्सीडेंट होता है तो अथॉरिटीज को इमीडिएटली टेलीफोनिक रिपोर्ट करनी होगी। उसके बाद हर हाल में 24 घंटे के अंदर रिटन रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इस प्रोसेस में की गई थोड़ी सी भी देरी ऑर्गेनाइजेशन पर सीवियर कंप्लायंस पेनल्टीज और इन्वेस्टिगेशंस अट्रैक्ट करेगी। और आखिर में पिलर 4, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये यूनियन नेगोशिएशंस और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को स्ट्रीमलाइन करने पर फोकस करता है। ये चौथा पिलर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नया कोर है। यहां एक स्पेसिफिक नंबर बेहद क्रूशल है, 14 डेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर किसी भी तरह की स्ट्राइक या लॉकआउट इनिशिएट करने से पहले एग्जैक्टली 14 दिन का एडवांस नोटिस देना अब मैंडेटरी है। इस नोटिस पीरियड के बिना की गई कोई भी स्ट्राइक कंप्लीटली इलीगल मानी जाएगी, जिसके लिए भारी पेनल्टीज लग सकती हैं। एक और बड़ा बदलाव है ये 51% थ्रेशोल्ड का नया कंसेप्ट। अगर किसी ट्रेड यूनियन के पास उस एस्टैब्लिशमेंट के 51% या उससे ज्यादा वेरीफाइड मेंबर्स का सपोर्ट है तो उसे आने वाले 3 साल के लिए एक्सक्लूसिव सोल नेगोशिएटिंग यूनियन का स्टेटस मिल जाएगा। ये फ्रेमवर्क नेगोशिएशंस को ब्रिलियंटली सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि अब एम्प्लॉयर्स के पास डील करने के लिए एक सिंगल अथॉरिटेटिव यूनियन होगी। छंटनी यानी रिट्रेंचमेंट के नियम अब और भी सख्त हो गए हैं। रिट्रेंचमेंट रिक्वायर्स अप टू 3 months एडवांस नोटिस और स्ट्रिक्टली फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसका क्लियर मतलब यह है कि हेड काउंट रिड्यूस करना अब एक रिगरस प्रोसेस बन चुका है।
ऑर्गेनाइजेशंस को सीनियरिटी का स्ट्रिक्टली पालन करना होगा। जो आखिरी में आए थे उन्हें पहले जाना होगा, और बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स को इन एक्शन से पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन भी लेनी होगी। यहाँ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और डिसिप्लिनरी एक्शंस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं और पकड़े जाने पर सिवियर पेनल्टीज या यहां तक कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। दूसरी तरफ है डिसिप्लिनरी एक्शंस। इन्हें लगाने के लिए अब एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर्ड रास्ता अपनाना पड़ेगा। प्रॉपर डोमेस्टिक इंक्वायरी बिठानी होगी, शो कॉज नोटिस इशू करना होगा और नेचुरल जस्टिस के रूल्स फॉलो करने होंगे। शॉर्टकट्स अब बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, द कंप्लायंस रोड मैप, सिक्योरिंग अ सीमलेस ट्रांजिशन टू द 2026 कोड्स। चारों मॉन्यूमेंटल पिलर्स हमने समझ लिए हैं। अब समय है थियोरी से एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ने का। ये एक रैपिड फायर एग्जीक्यूटिव चेकलिस्ट है जिसे तुरंत एक्शन में लाना चाहिए। सबसे पहले पेरोल सिस्टम्स का ऑडिट हो ताकि वो स्ट्रिक्टली 50% अलाउंस रूल के अंदर आते हों। ईपीएफओ और ईएसआईसी कंप्लायंसेस को डिजिटली अपग्रेड किया जाए। फिक्स टर्म वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को नए ग्रेचुइटी और बेनिफिट रूल्स के मुताबिक रिव्यू करना चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट्स में तुरंत मैंडेटरी जॉइंट सेफ्टी कमिटीज सेटअप करनी होंगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्ब्रेस करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। नए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में पेपरलेस एचआर डिपार्टमेंट्स को ऑफिशियली सपोर्ट किया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स और ऑनलाइन पोर्टल फाइलिंग्स अब पूरी तरह से परमिटेड हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, जब भी कोई इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रिकॉर्ड मांगे, उन्हें दिखाने के लिए एक ऑन डिमांड प्रिंटआउट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो द फाइनल टेक अवे इज दिस: भारत के लेबर लॉज अब पुराने फ्रैगमेंटेड फॉर्म से निकलकर कंप्लीटली यूनिफाइड और स्ट्रीमलाइंड हो चुके हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी जवाब मांग रहा है। द इंडियन लेबर लॉज आर यूनिफाइड। इज द कॉर्पोरेट कंप्लायंस स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड? ये कोड सिर्फ पन्नों पर लिखे गए रूल्स नहीं, बल्कि मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस का नया फाउंडेशन है। आज के इस विश्लेषण में समझे गए फैक्ट्स को इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट्स इनिशिएट करने के लिए जरूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंप्लायंस नॉलेज को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। मान लीजिए अगले महीने आपकी कंपनी का एचआर आपको बुलाता है और कहता है कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन अब बढ़ने वाला है। सुनकर अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल, किसी को भी अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस अच्छी खबर का सीधा मतलब ये है कि अगले महीने से आपके बैंक अकाउंट में आने वाली जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी। द डिबेट में आपका स्वागत है। और आज की चर्चा किसी हवाई फिलॉसफी पर नहीं है। हम उस चीज पर बात कर रहे हैं जो सीधा आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके भविष्य से जुड़ी है, यानी भारत के नए 2026 लेबर कोड्स। बिल्कुल, दशकों से हमारे देश में 40 से ज्यादा पुराने श्रम कानून थे। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं या कहीं नौकरी करते हैं तो नियमों के उस मकड़जाल में उलझना तय था। अब उस पूरे सिस्टम को साफ करके 4 नए कोड्स लागू किए गए हैं: वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और मेरा स्पष्ट मानना है कि ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं है। ये एक आधुनिक, डिजिटल और सशक्त वर्कफोर्स बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। सशक्त वर्कफोर्स। देखिए, अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीएफओ हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। लेकिन मैं इन कोड्स को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पुरानी व्यवस्था उलझी हुई थी, उसमें सुधार की जरूरत थी। लेकिन जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर कानूनों को सरल बनाते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि आपने किसकी कीमत पर यह सरलीकरण किया है। तो आपको लगता है कि? मेरा तर्क यह है कि इन 4 नए कोड्स का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब इनका पूरा डीएनए, नियोक्ताओं को हायर एंड फायर की खुली छूट देने और कर्मचारियों की कलेक्टिव पावर को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा निराशावादी नजरिया है। चलिए सीधे उस बात पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, आपकी सैलरी। हाँ, वो टेक होम सैलरी वाला पॉइंट। राइट। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था? कंपनियां पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बचाने के लिए एक बहुत बड़ी चालाकी करती थीं। वो आपके मूल वेतन यानी बेसिक पे को कुल सैलरी का सिर्फ 20 या 30% रखती थी। बिल्कुल, और बाकी पैसा अलाउंसेस में। हाँ, बाकी का 70% वो एचआरए, कन्वेंस जैसे भत्तों में डाल देती थी।
इससे नुकसान किसका होता था? सीधा कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड का। अब नए वेजेस कोड ने एक बहुत ही कड़ा नियम लागू किया है। अब भत्ते आपके कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अगर हुए तो वो एक्स्ट्रा पैसा अपने आप बेसिक पे में जुड़ जाएगा। ये लूपहोल हमेशा के लिए बंद हो गया है। इससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। इसमें आपको कॉर्पोरेट की साजिश कैसे नजर आती है? देखिए, मैं इसे साजिश नहीं कह रहा, मैं इसके जमीनी असर की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने खूब कहा कि बेसिक पे बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। तो जब बेसिक पे बढ़ेगा तो जाहिर है उस पर कटने वाला पीएफ भी बढ़ेगा। अब सोचिए बेंगलोर या गुड़गांव में काम करने वाले एक 25 साल के युवा कर्मचारी के बारे में जो हर महीने भारी भरकम किराया भरता है। आज की इस कमर तोड़ महंगाई में उसे नकद पैसों की जरूरत आज है या 30 साल बाद मिलने वाले पीएफ के बड़े कॉर्पस की? एचआर तो अपना बजट नहीं बढ़ाएगा ना, वो उसी पुरानी सीटीसी में एडजस्टमेंट करेगा। लेकिन ये नतीजा, उस युवा की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। आप भविष्य सुरक्षित करने के नाम पर उसकी आज की जरूरत को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ये तो वित्तीय अनुशासन है। अगर हम कर्मचारियों को उनके हाल पर छोड़ दें तो कोई भी रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं करेगा। और बात सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज के पीएफ की नहीं है। जरा उस वर्ग के बारे में सोचिए जो पहले कानूनी रूप से अस्तित्व में ही नहीं था। आप गिग वर्कर्स की बात कर रही हैं? बिल्कुल, स्विगी, जोमैटो या उबर के डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवर्स। इतिहास में पहली बार सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत उन्हें एक पहचान मिली है। उनके लिए एक विशेष फंड बनाया जा रहा है जिसमें एग्रीगेटर्स अपने टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा डालेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले वो कानून की नजर में अदृश्य थे, आज उनके लिए एक वैधानिक फंड है। अरे रुकिए, यहां मैं आपको टोकूंगा। ये अदृश्य से दृश्य होने की कहानी बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जरा गहराई में चलिए। आपने उन्हें सोशल सिक्योरिटी कोड में तो जगह दे दी, लेकिन वेजेस कोड में क्यों नहीं दी? क्योंकि उनका मॉडल अलग। क्या एक डिलीवरी पार्टनर को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिला है? नहीं। क्या उसके काम के घंटे तय किए गए हैं? नहीं। असल में इन कोड्स ने बहुत ही चालाकी से गिग वर्कर्स को कर्मचारी मानने से ही इनकार कर दिया है। देखिए, वो पारंपरिक कर्मचारी नहीं है। लेकिन जब कोई स्पष्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई संबंध ही नहीं है तो वो टर्नओवर का 1-2% हिस्सा मुझे एक चैरिटी की तरह लगता है, अधिकार की तरह नहीं। आप उन्हें एक फंड दे रहे हैं, लेकिन अगर कल सुबह एग्रीगेटर का एल्गोरिदम किसी डिलीवरी बॉय की आईडी ब्लॉक कर दे तो वो किस लेबर कोर्ट में जाएगा? आप गिग इकोनॉमी को एक 1970 की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के चश्मे से देख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम उबर या स्विगी पर पारंपरिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मॉडल थोप देंगे तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही ढह जाएगा। गिग काम का मुख्य आधार ही लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। एक ड्राइवर एक ही दिन में 3 अलग-अलग ऐप्स के लिए काम कर सकता है। हाँ, वो तो है। तो आप उसे किसी एक कंपनी का कर्मचारी कैसे घोषित कर सकते हैं? जो फंड बनाया गया है वो इसी शून्यता को भरने का एक आधुनिक व्यवहारिक तरीका है, जहां हम बिजनेस मॉडल को भी नहीं मार रहे और वर्कर को एक सेफ्टी नेट भी दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि गिग इकोनॉमी की प्रकृति अलग है, लेकिन जो काम पारंपरिक रूप से स्थायी होता था, परमानेंट होता था, उसका क्या? क्या मतलब है आपका? मुझे लगता है कि इस लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी का बहाना बनाकर परमानेंट नौकरियों को ही खत्म किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा हथियार है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट या एफटीई की नई व्यवस्था। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। एफटीई तो असल में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के शोषण को खत्म करने का एक सीधा पुल है। कैसे? पहले क्या होता था, अगर कंपनी को कुछ समय के लिए वर्कर चाहिए तो वो एक ठेकेदार को बुलाती थी। ठेकेदार अपना कमीशन रखता था, वर्कर को आधी सैलरी देता था और कोई छुट्टी या मेडिकल बेनिफिट नहीं देता था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर। राइट। अब कंपनी उसी वर्कर को सीधे एफटीई के तौर पे 1 या 2 साल के लिए काम पर रख सकती है। कानून स्पष्ट कहता है कि उस एफटीई वर्कर को वही सैलरी, वही छुट्टियां और वही लाभ मिलेंगे जो उसी रोल में काम कर रहे एक स्थायी कर्मचारी को मिलते हैं। कागजों पर तो ये अच्छा है। और सिर्फ कागजों पर नहीं, यहाँ तक कि एफटीई को सिर्फ 1 साल काम करने पर ग्रेचुइटी भी मिलेगी, जबकि स्थायी कर्मचारियों को 5 साल इंतजार करना पड़ता है। ये सुरक्षा है, इसे आप कैसे नकार सकते हैं? मैं नकार नहीं रहा,
मुझे आपकी ये बात समझ आ रही है कि कागज पर एफटीई को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जरा एक कंपनी के सीएफओ या एचआर हेड के नजरिए से सोचिए। ठीक है, सोचिए। अगर मुझे ये कानूनी छूट मिल गई है कि मैं किसी भी व्यक्ति को 1 साल, 2 साल या 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकता हूं और उसे वही काम करा सकता हूं जो एक परमानेंट कर्मचारी करता है, तो मैं भविष्य में कभी किसी को परमानेंट नौकरी दूंगा ही क्यों? क्योंकि आपको टैलेंट को रिटेन करना है। अगर आप सबको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे तो आपके पास कोई लॉयल और अनुभवी वर्कफोर्स बचेगी ही नहीं। बात टैलेंट रिटेन करने की उतनी नहीं है जितनी छटनी के नियमों से बचने की है। छटनी? हाँ, रिट्रेंचमेंट। पुराने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के नियमों के तहत जब आप किसी स्थायी कर्मचारी को निकालते थे तो आपको एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था। हर 1 साल की सर्विस के बदले 15 दिन के वेतन का छटनी मुआवजा देना होता था। वो बहुत पेचीदा था। लेकिन सुरक्षा थी। अब एफटीई के मामले में क्या जादू हुआ है पता है? जब किसी एफटीई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो कानून उसे छटनी मानता ही नहीं है। इसका मतलब है कोई मुआवजा नहीं, सरकार से कोई परमिशन नहीं, 1 साल काम कराइए, ग्रेच्युटी का एक छोटा सा हिस्सा दीजिए और फिर बिना किसी कानूनी नोटिस के बाहर कर दीजिए। आपका ये पुल कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट की तरफ नहीं ले जा रहा है। ये आपकी परमानेंट नौकरियों को खत्म करके पूरी इकोनॉमी को एक अस्थायी वर्कफोर्स में बदल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आप आधुनिक इकोनॉमी की वास्तविकता को इग्नोर कर रहे हैं। आज का काम प्रोजेक्ट आधारित है। अगर एक आईटी कंपनी को 2 साल का कोई ग्लोबल प्रोजेक्ट मिलता है या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी 3 साल के लिए एक ब्रिज बना रही है, तो वो 20 साल के लिए लोगों को परमानेंट नौकरी पे क्यों रखेगी? जब प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म। एफटीए उस जरूरत को लीगल और सम्मानजनक तरीके से पूरा करता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम आज भी 1980 के उन सख्त नियमों से चिपके रहें जिनके डर से विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने से डरती थीं? विदेशी कंपनियों को डर लेबर नियमों से कम बुनियादी ढांचे की कमी से ज्यादा लगता था। लेकिन चलिए, अगर वर्कफोर्स अस्थायी हो भी जाए तो कम से कम उनके पास अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार तो होना चाहिए ना। तो वो अधिकार है ना उनके पास? कहाँ है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ने उस अधिकार यानी हड़ताल करने के अधिकार को लगभग असंभव बना दिया है। पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देने का नियम सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में लागू होता था, जैसे पानी, बिजली, अस्पताल। अब आपने इसे भारत के हर छोटे बड़े उद्योग पर लागू कर दिया है। तो इसमें नुकसान क्या है? अगर आप काम रोकना चाहते हैं तो 14 दिन पहले बता दीजिए। ये कोई तानाशाही तो नहीं है। ये एक तरह का पावर प्ले है। हड़ताल कोई पिकनिक नहीं होती। जब कोई प्रबंधन रातों रात कोई एक तरफा फैसला थोपता है, शिफ्ट टाइमिंग बदल देता है या सुरक्षा मानकों से समझौता करता है, तो काम रोकना ही कर्मचारियों के पास एकमात्र हथियार होता है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको बता दूं कि मैं 14 दिन बाद हड़ताल करूंगा, तो इन 14 दिनों में प्रबंधन क्या करेगा? वो कच्चा माल कहीं और शिफ्ट कर देगा, स्ट्राइक तोड़ने वालों का इंतजाम कर लेगा और कर्मचारियों की सौदेबाजी की पूरी ताकत ही खत्म हो जाएगी। और अगर गुस्से में आकर कर्मचारियों ने बिना नोटिस काम रोक दिया तो अब उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आप हड़ताल को समस्या का समाधान मानकर चल रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हड़ताल सिस्टम का फेलियर है। कैसे? ये 14 दिन का नोटिस पीरियड इसलिए नहीं है कि प्रबंधन तैयारी कर ले। ये इसलिए है कि जैसे ही नोटिस दिया जाता है, कानूनी तौर पर एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की एंट्री हो जाती है और सुलह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये 14 दिन का समय दोनों पक्षों को ठंडे दिमाग से टेबल पर बैठकर बात करने के लिए मजबूर करता है। और बात सिर्फ नोटिस की नहीं है। नए नियमों में 100 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली हर कंपनी में वर्क्स कमेटी बनाना अनिवार्य है। वर्क्स कमेटी? हाँ, जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के प्रतिनिधि होंगे। उद्देश्य ये है कि फैक्ट्री फ्लोर का विवाद फैक्ट्री फ्लोर पर ही सुलझ जाए, बात हड़ताल तक पहुंचे ही नहीं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे औद्योगिक संबंध परिपक्व हों? परिपक्वता तब आती है जब टेबल पर दोनों पक्षों के पास समान ताकत हो। जब आपने किसी का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया तो वो टेबल पर सिर्फ मिन्नतें कर सकता है, मूल भाव नहीं। और आप कह रही हैं कि वर्कर प्रतिनिधि बात करेंगे। कैसे करेंगे? ट्रेड यूनियन की मान्यता के नियमों को देखिए। अब किसी यूनियन को कंपनी से बात करने वाला एकमात्र वार्ताकार यानी सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनने के लिए कम से कम 51% कर्मचारियों का समर्थन चाहिए। हाँ, मेजॉरिटी चाहिए।
पर आज के दौर में जहां कुछ लोग एफटीई हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कुछ परमानेंट हैं, इतने बिखरे हुए वर्कफोर्स में 51% वोट इकट्ठा करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। नतीजा ये होगा कि कई कंपनियों में कोई मान्यता प्राप्त यूनियन ही नहीं होगी। प्रबंधन जिससे चाहेगा, जो चाहेगा वो तय करेगा। मुझे लगता है कि 51% का नियम बहुत जरूरी था। पहले एक ही कंपनी में 10-10 अलग-अलग यूनियन होती थी। हाँ, मल्टीप्लिसिटी थी। तो मैनेजमेंट किससे बात करे? एक से बात करो तो दूसरी हड़ताल कर देती थी। 51% का नियम सुनिश्चित करता है कि जो भी यूनियन बात कर रही है वो सच में मेजॉरिटी की आवाज है। चलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन से बाहर निकलते हैं। अगर वर्कर हड़ताल नहीं कर सकता और यूनियन बनाना इतना मुश्किल हो गया है, तो वर्कर की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगी, और कौन? जब बात कारखाने में मशीन की सुरक्षा या स्वास्थ्य की आती है तो हम सरकार की तरफ ही देखते हैं, लेकिन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यानी OSH कोड में जो किया गया है वो मुझे सबसे ज्यादा डराता है। कारखानों का निरीक्षण करने वाले इंस्पेक्टर का नाम बदलकर अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। और ये भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हम सब जानते हैं कि पुराना इंस्पेक्टर राज कैसा काम करता था। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार था। बिल्कुल था। वो इंस्पेक्टर सुरक्षा सुनिश्चित करने नहीं आता था, वो सिर्फ कमियां निकालकर रिश्वत वसूलने आता था। ये नया फैसिलिटेटर मॉडल एक कंप्लायंस फर्स्ट अप्रोच है। अब अधिकारी का काम सिर्फ फाइन लगाना नहीं है, बल्कि नियोक्ता को ये समझाना है कि नियमों का पालन कैसे किया जाए। ये एक सहयोगात्मक रवैया है, दंडात्मक नहीं। जब एक कारखाने में बॉयलर से गैस लीक हो रही होती है या एक वर्कर बिना हेलमेट के क्रेन के नीचे काम कर रहा होता है, तब आपको सहयोग नहीं, एक दंडात्मक डंडे की जरूरत होती है। शब्दों का ये खेल बहुत गहरा है। लेकिन जब इंस्पेक्टर एक फैसिलिटेटर बन जाता है तो फैक्ट्री मालिक के मन से कानून का डर ही खत्म हो जाता है, और इस डर को पूरी तरह खत्म करने का काम किया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के नियम ने। आप कंपाउंडिंग को गलत समझ रहे हैं। कैसे? अब अगर कोई नियोक्ता सुरक्षा नियमों की अनदेखी करता है और पकड़ा जाता है तो उसे कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। वो बस एक फाइन, एक फीस भरेगा और मामला रफा दफा। क्या ये एक तरह का पे टू प्ले सिस्टम नहीं बन गया? आप एक टेक्निकल गलती का फाइन दे सकते हैं, लेकिन जब कोई वर्कर उस मशीन में हाथ गवा बैठता है तो वो कोई टेक्निकल गलती नहीं होती। देखिए, आप नियमों को आधा पढ़ रहे हैं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस केवल उन गलतियों के लिए है जो क्लेरिकल या छोटी मोटी हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कोई रजिस्टर मेंटेन न करना या रिटर्न फाइल करने में 10 दिन की देरी होना। अगर किसी सुरक्षा उल्लंघन की वजह से कारखाने में किसी कर्मचारी की मौत होती है या उसे गंभीर चोट आती है तो वो कंपाउंडेबल बिल्कुल नहीं है। उसमें नियोक्ता पर भारी जुर्माना और आपराधिक मामला चलेगा। क्रिमिनल लायबिलिटी। बिल्कुल, बल्कि OSH कोड ने सुरक्षा की जिम्मेदारी को इतना सख्त कर दिया है जितना पहले कभी नहीं था। मैं आपको सबसे बड़ा बदलाव बताती हूँ, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी। मान लीजिए कोई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। पहले क्या होता था, फैक्ट्री में एक ठेकेदार का वर्कर घायल होता था तो बड़ी कंपनी हाथ झाड़ लेती थी कि ये तो ठेकेदार का आदमी है, हम क्या करें। हाँ, ये बहुत आम बात थी। अब नए कानून ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ठेकेदार अपने वर्कर को सेफ्टी गियर या मेडिकल सुविधा नहीं देता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे मुख्य कंपनी यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर होगी। अब कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। महिलाओं के लिए 50 से ज्यादा वर्कर होने पर क्रैच अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें नाइट शिफ्ट में पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ काम करने की कानूनी आजादी दी गई है। क्या ये प्रोग्रेस नहीं है? मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वाली बात एक बहुत अच्छा कदम है, और महिलाओं की शिफ्ट के नियम भी प्रगतिशील है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन 4 कोड्स में सब कुछ बुरा है, लेकिन जब आप इसे एक पैकेज की तरह देखते हैं तो असली तस्वीर नजर आती है। क्या है वो असली तस्वीर? स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी फैक्ट्री के नियम बनाने की छूट 100 कर्मचारियों वाली कंपनी से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों वाली कंपनी तक कर दी गई है। इसका मतलब है कि भारत के 80% से ज्यादा छोटे और मंझोले कारखाने अब बिना किसी सरकारी अप्रूवल के अपनी मर्जी से हायर और फायर के नियम बना सकते हैं। संवितरण के नाम पर आपने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जहां वर्कर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है, वो हड़ताल नहीं कर सकता, वो 51% की शर्त के कारण यूनियन नहीं बना सकता, और उसका निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अब एक फैसिलिटेटर है जो शायद छोटी गलतियों पर फाइन लेकर चला जाएगा।
आप इसे प्रोग्रेस कह रही हैं, मैं इसे अधिकारों का एक तरफा सरेंडर कहता हूं। अधिकारों का असली सरेंडर तो वो पुराना सिस्टम था जहां जहां 40 कानूनों के डर से कारखाने अपने एम्प्लॉय काउंट को 99 पर ही रोक देते थे ताकि उन पर कानून लागू ही ना हो। उन 40 कानूनों ने भारत में रोजगार पैदा नहीं होने दिया। आज इन 4 कोड्स के कारण हम एक ही छत के नीचे डिजिटल कंप्लायंस देख रहे हैं। ईपीएफओ और ईएसआईसी के यूनिफाइड पोर्टल्स आ गए हैं। एक वर्कर जो बिहार से महाराष्ट्र काम करने जाता है, उसे अब अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक के रूप में पोर्टेबिलिटी मिल रही है। हाँ, पोर्टेबिलिटी अच्छी चीज है। उसका राशन, उसका पीएफ सब डिजिटल है। ये नया ढांचा एक ऐसे भारत की नींव है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन से मुकाबला करना चाहता है। हमें अपनी वर्कफोर्स को भी तो उस स्तर पर लाना होगा ना। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बहस है जहां हमारी बुनियादी सोच ही अलग है। आप इस बात पर फोकस कर रही हैं कि डिजिटल पोर्टल बन गए हैं और निवेश आ रहा है। मेरा फोकस इस बात पर है कि उस डिजिटल पोर्टल के पीछे जो इंसान खड़ा है, उसकी नौकरी कितनी सुरक्षित है। बिल्कुल, दोनों पहलू अहम हैं। लेकिन हाँ, हम एक बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं। कागजों पर बहस करना एक बात है और असल जिंदगी में इनका लागू होना यानी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी बात। सरकार ने जो ये यूनिफाइड पोर्टल्स बनाए हैं, अगर ये सच में बिना करप्शन के काम करते हैं तो शायद असंगठित क्षेत्र के उन करोड़ों लोगों को पहली बार कोई पहचान मिल पाए। सही बात है। लेकिन इसका फैसला तब होगा जब वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर किसी फैक्ट्री में जाएगा और ये देखेगा कि क्या वो सच में नियम लागू करवा पाता है या बस एक रबर स्टैंप बनकर रह जाता है। बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ कि किसी भी अच्छे कानून की असली परीक्षा उसके लागू होने में ही होती है। डिजिटल सिस्टम से बीच के बिचौलियों और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद जरूर मिलेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। देखते हैं। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद हमने आपके सामने तस्वीर के दोनों पहलू रख दिए हैं। हमने देखा कि कैसे बेसिक पे का नियम आपकी आज की सैलरी और कल के पीएफ को बदल रहा है, और कैसे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कंपनियों को लचीलापन तो दे रहा है, लेकिन स्थायी नौकरियों पर सवाल भी खड़े कर रहा है। बिल्कुल, हड़ताल के 14 दिन के नोटिस से लेकर फैसिलिटेटर के नए रोल तक सब कुछ बदल गया है। फिर कर्मचारियों की सुरक्षा से किया गया एक समझौता है। क्या हम प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन दोनों को एक साथ साध सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत सामग्री में इन नियमों की और भी कई परतें हैं जिनका आप गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल ये तय करना अब आपके ऊपर है। द डिबेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय और एक और नई बहस के साथ। एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए जहां 29 अलग-अलग और बेहद शोर मचाती हुई मशीनें चल रही हैं। और ये सारी मशीनें आपस में बुरी तरह से उलझी हुई हैं। हर एक मशीन का अपना अलग मैनुअल है, अपना अलग स्विच बोर्ड है और अपना एक बिल्कुल ही अलग तरीका है काम करने का। बिल्कुल, और उससे होता ये था कि एक आम वर्कर या यहाँ तक के उस फैक्ट्री के मैनेजर के लिए भी ये समझना लगभग नामुमकिन था कि कौन सी मशीन कब मेंटेनेंस मांगेगी। सही बात है। या किसके मैनुअल में अचानक से क्या नया नियम जुड़ गया है। ये भारत के पुराने लेबर लॉस की असलियत थी। और उस शोर और अफरा तफरी में नतीजा ये निकलता था कि सिस्टम हमेशा एक केओस में रहता था। हर कोई बस किसी तरह से कंप्लायंस के नाम पर काम चलाने की कोशिश कर रहा था। राइट, लेकिन पुराने कानून इतने कॉम्प्लेक्स थे कि उनका पालन करना एक हेडेक बन चुका था और उनका फायदा उठाना यानी लूपहोल्स ढूंढना काफी आसान हो गया था। लेकिन तभी इस पूरी फैक्ट्री का नया डिजाइन सामने आता है। उन 29 पुरानी शोर मचाने वाली और उलझी हुई कानूनी मशीनों को हटाकर उनकी जगह सिर्फ 4 बिल्कुल नई, साफ और बेहद आसान कोड्स वाली मशीनें लगा दी जाती हैं। एग्जैक्टली, सब कुछ स्ट्रीमलाइंड, सब कुछ क्लियर। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम भारत के लेबर लॉज में आए इस ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो एक बेहद डिटेल्ड इंग्लिश कंप्लायंस स्क्रिप्ट है जिसमें एचआर, पेरोल और सेफ्टी से जुड़े लगभग 300 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। हाँ, और हमारा मिशन यही है कि हम इन चारों लेबर कोड्स और सेंट्रल रूल्स 2026 को बिना किसी भारी लीगल जार्गन या टेक्निकल शब्दों के समझें। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर एक आम वर्कर की सैलरी, उसकी छुट्टियों और कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स की स्ट्रेटेजी पर इन 4 नई किताबों का क्या और कैसे असर पड़ने वाला है।
इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस मुद्दे से जो हर एम्प्लॉय के रोजमर्रा के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पैसा। हाँ, पैसा। द कोड ऑन वेजेस 2019, इस एक कोड ने 4 पुराने कानूनों को अपने अंदर समा लिया है। जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जैसे कानून शामिल थे, राइट? सही कहा। पहले इन सब के लिए अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, अलग अलग डेफिनेशंस होती थी वेज की। अब चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का, एक ही आसान फ्रेमवर्क सब पर लागू होता है। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, पैसा और सैलरी स्ट्रक्चर। इस नए कोड में वेजेस की डेफिनेशन को बहुत ही ध्यान से और स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है। इसमें बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस तो आते हैं, लेकिन एचआरए या कन्वेंस जैसे अलाउंसेस इसमें शामिल नहीं होते। राइट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसने कॉर्पोरेट दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी है। हाँ, और इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। सीटीसी को एक पिज्जा की तरह सोचिए। अच्छा। पिछले कई दशकों से एम्प्लॉयर्स क्या करते थे कि उस पिज्जा का बेस बहुत छोटा रखते थे, शायद टोटल सीटीसी का सिर्फ 20%। हाँ, और बाकी का 80% हिस्सा अलग अलग अलाउंसेस के नाम पर दे देते थे, जैसे वॉशिंग अलाउंस, रीडिंग अलाउंस या कन्वेंस। एग्जैक्टली। और इसका सीधा सा मकसद ये होता था कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेटिट्यूड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कम हो जाए, क्योंकि वो तो सिर्फ बेसिक पे पर कैलकुलेट होता है। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है और ठीक यही वो लूप होल था जिसे सरकार बंद करना चाहती थी। नए कोड में एक 50% सीटीसी रूल लाया गया है। राइट। ये मैथमेटिकली कैसे काम करता है? तो ये रूल मैकेनिकली इस तरह काम करता है कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से दिए गए टोटल अलाउंसेस किसी वर्कर के टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी वेजेस या बेसिक पे में जुड़ जाएगा। वाओ, तो मतलब बेस को आर्टिफिशियली छोटा नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक नया नियम नहीं है, ये सालों से चले आ रहे प्रेडेटरी वेज स्ट्रक्चरिंग को रोकने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। एम्प्लॉयर अब पिज्जा का बेस 50% से कम नहीं रख सकते। तो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझूं, तो इसका सीधा असर हर महीने अकाउंट में आने वाली इन हैंड सैलरी पर पड़ेगा। हाँ, पड़ सकता है। क्योंकि अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो उस पर पीएफ का डिडक्शन भी बढ़ेगा। इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ रिटायरमेंट सेविंग्स और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली पीएफ और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बेसिक वेज का फाउंडेशन मजबूत हो गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। और इसके अलावा मिनिमम वेजेस को लेकर भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसे फ्लोर वेज कहते हैं। फ्लोर वेज? हाँ, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। हाँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक बेस फ्लोर वेज फिक्स करेगी और चाहे कोई भी स्टेट हो, वो इस फ्लोर वेज से कम मिनिमम वेज तय नहीं कर सकती। अच्छा, तो एक एब्सोल्यूट मिनिमम सेट कर दिया गया है पूरे देश के लिए। सही बात है। और मिनिमम वेजेस ऑर्डिनरीली हर 5 साल में रिव्यू और रिवाइज करना मैंडेटरी होगा। इसने अलग अलग स्टेट्स के बीच मिनिमम वेज की इनइक्वालिटी को काउंटर करने का काम किया है। और इसी कोड में जेंडर इक्वालिटी को लेकर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम भी उठाया गया। हाँ, बिल्कुल उठाया गया। देखिए, सेम काम या सिमिलर नेचर के काम के लिए किसी भी जेंडर को अलग रेट पर पे करना अब अनलॉफुल है। लेकिन जो बात मुझे सबसे अहम लगी, हाँ, वो ये है कि हायरिंग या रिक्रूटिंग के टाइम पर भी एम्प्लॉयर किसी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये सच में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पहले पे पैरिटी की बात सिर्फ करंट एम्प्लॉयज के लिए होती थी, लेकिन अब रिक्रूटमेंट फनल को इस दायरे में ला दिया गया। सही कहा। इसके साथ ही वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए डिडक्शंस और ओवरटाइम को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया है। राइट। ओवरटाइम को लेकर क्या बदलाव है? अगर कोई नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करता है तो ओवरटाइम का रेट अब स्ट्रिक्टली 2 गुना यानी 2x होगा। वाओ, स्ट्रिक्ट 2x। हाँ, और किसी भी वर्कर की वेजेस से टोटल डिडक्शंस, चाहे वो लोन रिकवरी हो या एडवांस, किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक अच्छा प्रोटेक्टिव मेजर है। और फाइन का क्या रूल है? पहले तो एम्प्लॉयर्स आर्बिट्रली फाइन लगाते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता। एक वेज पीरियड में लगाया गया फाइन वेजेस के 3% से ज्यादा नहीं हो सकता और 15 साल से कम उम्र के किसी भी वर्कर पर फाइन बिल्कुल बैन है।
अच्छा, और फाइन लगाने का प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट किया गया ना? बिल्कुल, फाइन इम्पोज करने से पहले शो कॉज अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी है और ये फाइन की रकम वर्कर्स के बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए ही यूज होगी। ये रूल्स आर्बिट्ररी वेज डॉकिंग को पूरी तरह खत्म करते हैं। तो अब जब सैलरी का स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल फाउंडेशन ठीक हो गया है, तो अगला सवाल आता है उस सेफ्टी नेट का जो किसी भी आम इंसान को बीमारी, एक्सीडेंट या रिटायरमेंट के वक्त चाहिए होता है। तो आइए बढ़ते हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की तरफ। इस एक अकेले कोड ने 9 पुराने लॉज को रिप्लेस किया है। सही बात है, 9 पुराने लॉज जिसमें ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसे पुराने स्तंभ शामिल हैं। तो इस नए कोड में ऐसा क्या खास है जिससे इतना लैंडमार्क माना जा रहा है? ये कोड इसलिए लैंडमार्क माना जा रहा है क्योंकि इसने कवरेज की डेफिनेशन को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया है। कैसे? देखिए, पहले सोशल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ उन लोगों से होता था जो किसी एयर कंडीशनड ऑफिस में या किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम करते थे। राइट, जो परमानेंट पेरोल पर होते थे। मतलब आजकल हर शहरी इंसान इन एप्स पर निर्भर है। बिल्कुल। लेकिन जो डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर्स इन प्लेटफॉर्म्स की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी का क्या? पहली बार इस कोड ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। हाँ, एग्रीगेटर्स को अब अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% या पर गिग वर्कर एक निश्चित अमाउंट एक नए सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। लेकिन मुझे यहाँ एक टेक्निकल पुशबैक देना है। बोलिए। एक ऐप बेस्ड गिग वर्कर जिसका कोई एक फिक्स बॉस नहीं है, जो आज फूड डिलीवरी कर रहा है और कल राइड हेलिंग ऐप चला रहा है, उस पर यह स्टैट्यूटरी कानून प्रैक्टिकली कैसे लागू हो सकता है? ये तो किसी एक कंपनी का एम्प्लॉय है ही नहीं। यही तो इस कोड का सबसे बड़ा इनोवेशन है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये कानून समझ चुका है कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अब बदल रही है। अच्छा, इसीलिए ये एम्प्लॉय शब्द से आगे बढ़कर वर्कर को पहचानता है और इस समस्या का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला गया है पोर्टेबिलिटी के जरिए। पोर्टेबिलिटी ये कैसे काम करती है? देखिए, ईपीएफओ या ईएसआईसी जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन के माध्यम से वर्कर की आइडेंटिटी लॉक हो जाती है। ओह, जैसे हमारा ईपीएफ अकाउंट होता है। एग्जैक्टली। एक वर्कर ऐप बदल सकता है, अपना शहर बदल सकता है, लेकिन उसका सोशल सिक्योरिटी अकाउंट उसके साथ ट्रैवल करेगा और हर नया एग्रीगेटर उसी अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा। ये पोर्टेबिलिटी सच में गेम चेंजर है। मतलब वर्कर किसी ऐप का मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी का एक और बड़ा एग्जाम्पल हमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी एफटी वर्कर्स के केस में देखने को मिलता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के केस में। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड था कि वर्कर्स को सिर्फ 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जाता था। सही कहा, ताकि उन्हें ग्रेच्युटी ना देनी पड़े। क्योंकि पुराने कानून के हिसाब से ग्रेच्युटी तभी मिलती थी जब कोई वर्कर लगातार 5 साल एक ही कंपनी में काम करे। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए 5 साल सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन था। और इस कोड ने उस एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी को डिसेबल कर दिया है। अब एफटी वर्कर्स को 5 साल का वेट नहीं करना होगा। वेट, रियली? तो अब क्या रूल है? अगर उन्होंने सिर्फ 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर ली है तो वो ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हैं। वाओ, सिर्फ 1 साल? कैलकुलेशन का तरीका वही रहेगा, 15 दिन की वेजेस पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, लेकिन एलिजिबिलिटी का थ्रेशोल्ड ड्रास्टिकली कम कर दिया गया है। इसका असर ये होगा कि अब कंपनी सिर्फ ग्रेच्युटी बचाने के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का सहारा नहीं ले सकेंगी, क्योंकि उन्हें इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर एम्प्लॉयज के बराबर ही वेजेस और बेनिफिट्स प्रोपोर्शनेटली देने होंगे। एग्जैक्ट पॉइंट। सोशल सिक्योरिटी कोड में मैटरनिटी बेनिफिट्स को भी मॉडर्न रियलिटीज के हिसाब से अपडेट किया गया है। हाँ, और उसमें क्या बदलाव आए हैं? पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते की पेड लीव तो मिलती ही है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग लगी वो ये है कि अडॉप्टिव मदर्स और सरोगेसी के जरिए बनने वाली कमिशनिंग मदर्स के लिए भी 12 हफ्ते का मैटरनिटी बेनिफिट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया गया है। ये वाकई बहुत जरूरी इंक्लूजन था। और फैसिलिटीज को लेकर क्या रूल्स है? साथ ही अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 50 या ज्यादा वर्कर्स हैं तो वहां क्रैश, जिसे झूला घर भी कहते हैं, उसकी फैसिलिटी देना मैंडेटरी है। और ये सिर्फ एक कमरा छोड़ देने की बात नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, इनके स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड है। सफाई, खिलौने और क्वालिफाइड केयर टेकर्स का होना जरूरी है। ये दिखाता है कि कंप्लायंस अब सिर्फ कागज पर टिक मार्क लगाना नहीं रह गया है, बल्कि वर्किंग एनवायरनमेंट की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सही बात है।
तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन गया, रिटायरमेंट और बीमारी के लिए सेफ्टी नेट तय हो गया। लेकिन उस इंसान का क्या जो एक्चुअल फिजिकल ऑफिस, कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्री या किसी माइन में अपना पसीना बहा रहा है? उसके रोजमर्रा के फिजिकल हैजर्ड्स और वर्किंग कंडीशंस का ध्यान कौन रखेगा? यहां से हम एंटर करते हैं तीसरे दायरे में, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसे आमतौर पर ओश कोड भी कहा जाता है। हाँ, और इसने 13 पुराने सेंट्रल लेबर लॉज को रिप्लेस किया है। 13 लॉज, ये तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। बिल्कुल। और ओएश कोड का स्कोप सिर्फ फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है। ये माइंस, डॉक्स, प्लांटेशंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स और यहाँ तक कि ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन और न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट्स को भी कवर करता है। अच्छा, इतना ब्रॉड कवरेज है इसका? हाँ, इसका पूरा आर्किटेक्चर इस सोच पर आधारित है कि वर्कर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो शुरुआती 2 कोड्स गाड़ी के डैशबोर्ड और इंश्योरेंस को अपग्रेड करने जैसे थे, फाइनेंसेस और सेफ्टी नेट। लेकिन ये ओएशओ कोड गाड़ी के चैसी को मजबूत करने, सीट बेल्ट्स और एयरबैग्स लगाने जैसा है, ताकि इंजन यानी कि वर्कर क्रैश ना हो जाए। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। जिसे वर्किंग आवर्स को स्ट्रिक्टली लिमिट किया गया है, मैक्सिमम 8 घंटे पर डे और 48 घंटे पर वीक। और इस इंजन को ठंडा रखने के लिए लगातार 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का रेस्ट पीरियड मैंडेटरी कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीने का ठंडा पानी, साफ वॉशरूम्स और 250 से ज्यादा वर्कर्स होने पर कैंटीन की फैसिलिटी, ये सब अब किसी ओनर की मेहरबानी नहीं, वर्कर के फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट। ये फैसिलिटीज अब कानूनी हक है। एम्प्लॉयर के लिए अब हेल्थ और सेफ्टी एक प्राइमरी ड्यूटी बन चुकी है। जो वर्कर्स हैजार्डस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयर को फ्री एनुअल मेडिकल चेकअप्स अरेंज करने होंगे और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। हाँ, उनका हेल्थ रजिस्टर मेंटेन करना होगा। फर्स्ट एड बॉक्सेस, फ्री पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई और प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग देना अब कानूनी बाध्यता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नियम क्लियर किए गए हैं। नाइट शिफ्ट यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से काम करवाया जा सकता है। राइट। लेकिन उसके लिए उनकी रिटन कंसेंट मैंडेटरी है और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर सेफ्टी एस्कॉर्ट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी। ये एक बहुत जरूरी बैलेंस है, जिससे महिलाओं के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी भी बनी रहे और उनकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन इस पॉइंट पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। बोलिए। इन सब बातों को असलियत में लागू कौन करवाएगा? और यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का। कॉलिंग एन इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर साउंड्स लाइक ग्रेट पीआर। क्या ये कॉर्पोरेट कंपनीज को आसानी से छोड़ देने या उन्हें लूप होल सिखाने का एक नया तरीका नहीं है? सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक डीपली रिसर्च बिहेवियरल शिफ्ट है। वो कैसे? पहले क्या होता था, इंस्पेक्टर का काम सिर्फ छापा मारना, गलतियां निकालना और पेनल्टी लगाना होता था। इस फियर बेस्ड पुलिसिंग का नतीजा ये निकलता था कि करप्शन बढ़ता था। राइट, लोग डरते थे और ब्राइब देते थे। एग्जैक्टली। वायलेशंस को बस छुपा दिया जाता था, सॉल्व नहीं किया जाता था। इस नए अप्रोच का मकसद पुलिसिंग से पार्टनरिंग की तरफ शिफ्ट होना है। अच्छा, मतलब एक पार्टनर की तरह काम करेंगे। हाँ, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का डुअल रोल है। पेनल्टीज अभी भी हैं। ओएसएच वायलेशंस पर 2 लाख से 3 लाख तक का फाइन लग सकता है। ओके, तो डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है? नहीं, पेनल्टीज स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका प्राइमरी काम एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस फ्रेमवर्क समझने में मदद करना है। माइनर टेक्निकल ऑफेंसेस के लिए अगर एम्प्लॉयर उस गलती को ठीक कर देता है, तो प्रोसिक्यूशन से पहले उस ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है। ये एक अच्छा अप्रोच है। सरकार का मानना है कि सिस्टमैटिक सेफ्टी फियर से नहीं, बल्कि प्रॉपर्ली डिजाइन सिस्टम से आती है। सिस्टम चाहे जितना भी प्रॉपर हो, टकराव तो हमेशा होते ही हैं। हाँ, ह्यूमन नेचर है। तो जब एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच बात पूरी तरह बिगड़ जाए, हड़ताल की नौबत आ जाए या फिर कंपनी बैंकरप्ट हो रही हो और मास लेऑफ्स करने पड़े, तब कौन सा कानून बीच में आता है? इस स्थिति को संभालने के लिए चौथा और आखिरी कोड लाया गया है, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। राइट। और ये कोड किन पुराने कानूनों को हटा रहा है? ये कोड ट्रेड यूनियंस एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जैसे पुराने और बेहद कंटेंशियस लॉज को रिप्लेस करता है। इसका मेन फोकस कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना और उन्हें सड़क से उठाकर एक लीगल टेबल पर लाना है।
और इसमें स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को लेकर नियम बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, राइट? जैसे किसी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अब अचानक वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना मैंडेटरी है और इस नोटिस पीरियड के दौरान स्ट्राइक करना टोटली इलीगल माना जाएगा। यही सेम नियम एम्प्लॉयर्स पर भी लागू होता है अगर वो फैक्ट्री को लॉकआउट करना चाहते हैं। हाँ, रूल्स दोनों के लिए इक्वल है। आखिर इस 14 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड के पीछे का लॉजिक क्या है? इसका सीधा सा लॉजिक है इमोशनल और नी जर्क रिएक्शंस पर स्पीड ब्रेकर लगाना। अच्छा, ये 14 दिन का समय इसलिए मैंडेटरी किया गया है ताकि कंसिलिएशन ऑफिसर इंटरवीनिंग पीरियड में दोनों पार्टीज को बुलाकर समझौता करवा सके। मेक सेंस, ताकि डायरेक्टली नुकसान ना हो। एग्जैक्टली। एक बार जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो प्रोडक्शन का नुकसान होता है और वर्कर्स की वेज का भी। सरकार का फोकस प्रीएम्प्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर है। अगर कंसिलिएशन टेबल पर बात नहीं बनती तब जाकर मैटर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि कंपनी को ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट करना ही पड़े, उसके लिए क्या सेफ्टी नेट्स हैं? नए रूल्स के मुताबिक अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 50 या ज्यादा वर्कर्स हैं और वहां ले ऑफ होता है तो एम्प्लॉयर को हर लेड ऑफ डे के लिए वर्कर को उसकी बेसिक और डीए का 50% कॉम्पेंसेशन देना होगा। 50% कॉम्पेंसेशन, ओके। और अगर कंपनी पूरी तरह बंद हो रही हो? अगर 100 से ज्यादा वर्कर्स वाली कंपनी को कंप्लीटली क्लोज करना हो तो 7 दिन पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और हर एलिजिबल वर्कर को उसकी हर साल की सर्विस के बदले 15 दिन की वेजेस कॉम्पेंसेशन के रूप में देनी होंगी। ये एक सॉलिड सेफ्टी नेट है। और ट्रेड यूनियंस को लेकर क्या बदलाव आए हैं? इस कोड का एक और सबसे बड़ा आकर्षण ट्रेड यूनियंस के नए नियम ही है। पुराने सिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक ही फैक्ट्री में 10 अलग-अलग स्प्लिंटर यूनियंस होती थीं। हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक यूनियन। राइट। तो जब मैनेजमेंट निगोशिएट करना चाहती तो समझ नहीं आता था कि असल वर्कर रिप्रेजेंटेशन किसके पास है, जिससे केओस और बढ़ता था। इस कोड ने एक 51% रूल इंट्रोड्यूस किया है। ये रूल क्या कहता है? अगर किसी एक यूनियन के पास 51% से ज्यादा वेरीफाइड वर्कर मेंबर्स हैं तो उसे ऑटोमेटिकली सोल नेगोशिएटिंग यूनियन का दर्जा मिल जाएगा। ओह वाओ। हाँ, तो एक ही प्राइमरी यूनियन होगी। और अगर किसी के पास 51% नहीं है तो 20% या उससे ज्यादा वाली यूनियंस को मिलकर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनानी होगी। इससे एम्प्लॉयर के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ बनता है जिसके साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा सके। ये काफी स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। एक और बड़ा पॉइंट जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा वो है डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में। अगर किसी वर्कर पर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही है और उसे सस्पेंड किया गया है तो नियम यह है कि एम्प्लॉयर को उसे पहले 90 दिन तक 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस देनी होगी। बिल्कुल। और अगर इंक्वायरी 90 दिन के बाद भी चलती है तो ये अलाउंस बढ़कर 75% हो जाएगा, बशर्ते देरी वर्कर की तरफ से ना हो रही हो। सही है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन चारों कोड्स को देखते हैं, हायरिंग, फायरिंग, यूनियंस, स्ट्राइक्स, तो क्या लगता है? क्या इसका मतलब ये है कि अब वर्कर्स की पावर को कॉर्पोरेट्स के फेवर में लिमिट कर दिया गया है या फिर कंपनीज के ऊपर कंप्लायंस का बोझ और बढ़ा दिया गया है? देखिए, असल में ये किसी एक साइड का पक्ष लेने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में एक प्रेडिक्टेबिलिटी लाने के बारे में है। प्रेडिक्टेबिलिटी, ये एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। जैसे एक प्रोविजन है कि 100 से ज्यादा वर्कर्स होने पर एस्टैब्लिशमेंट में वर्क्स कमेटी बनाना मैंडेटरी होगा। और इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद है कि एम्प्लॉयर और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों को फैक्ट्री फ्लोर पर ही सुलझा लें, पहले ही लेवल पर। ये कोड्स अनरेस्ट और कियोस को स्ट्रक्चर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए हम ये देख सकते हैं कि कैसे भारत का लेबर इकोसिस्टम 29 पुराने अलग अलग दिशा में भागते कानूनों से निकलकर 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो रहा है। वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, OSH और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एग्जैक्टली। और इन सबको आपस में जोड़ने वाला एक कॉमन थ्रेड है डिजिटाइजेशन। बिल्कुल। इन चारों कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी के बिना तो मुमकिन ही नहीं था। अब रिकॉर्ड्स किसी गोडाउन में धूल खाते हुए फिजिकल रजिस्टर्स में नहीं मिलेंगे। सही बात है। आधार लिंक्ड बोटल्स, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न्स यानी ECR
और ऑनलाइन कंप्लायंस ट्रैकर्स ने इंस्पेक्शन और ऑडिट ट्रेल्स को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बना दिया है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन 4 कानूनों का असर हर उस इंसान पर होगा जो भारत में काम करता है या किसी से काम करवाता है। चाहे एक मल्टीनेशनल आईटी फर्म हो, कल खुली कोई नई टेक स्टार्टअप हो, सालों पुरानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, या फिर आमतौर पर ग्रोसरी पहुंचाने वाला गिग वर्कर हो। हर किसी की सीटीसी, छुट्टियां, वर्किंग कंडीशंस और फ्यूचर सिक्योरिटी इन्हीं 4 कानूनों से तय होगी। एकदम सही एनालिसिस है ये। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक आखिरी, थोड़ा अलग और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार। आइए देखते हैं। हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में गिग इकोनॉमी और एग्रीगेटर फंड्स की बात की। सब कुछ डिजिटल हो रहा है, लेकिन तस्वीर को थोड़ा और आगे फॉरवर्ड कीजिए। आने वाले वक्त में जब एआई मॉडल्स और एल्गोरिदम्स पूरी तरह से ऑपरेशंस टेक ओवर कर लेंगे, अगर एक डिलीवरी राइडर को प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड एक एआई कर रहा है, उसको दिन भर के टास्क एल्गोरिदम असाइन कर रहा है, अच्छा, उसके राउट का ऑप्टिमाइजेशन मशीन कर रही है, और उसकी रेटिंग और यहां तक कि उसके प्रोफाइल को डीएक्टिवेट करने का फैसला भी एक ऑटोमेटेड कोड ले रहा है। राइट। तो ऐसी स्थिति में इस नए कानूनी दायरे के हिसाब से उस वर्कर का असली एम्प्लॉयर आखिर कौन कहलाएगा? एक इंसान या फिर सिर्फ लाइंस ऑफ कोड? जिस 29 मशीनों की क्योटिक फैक्ट्री की हमने शुरुआत में कल्पना की थी, क्या उस फैक्ट्री का मैनेजर कल को खुद एक एल्गोरिदम बनने वाला है? ये सच में एक चिलिंग और उतना ही वैलिड सवाल है, जिसका आने वाले दशक में सिर्फ लेबर लॉस को नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमन सोसाइटी को जवाब ढूंढना होगा। Imagine quitting your job today, like walking out of the office and having your entire final settlement hit your bank account in 48 hours. Not next month. Right, not in 60 agonizing days of emailing a ghosting HR department. 48 hours. It sounds almost impossible based on how things used to be. It really does. But in 2026, for over 500 million workers in India, that scenario just, shifted from a pipe dream into ironclad law. Yeah, it's a massive reality check. Exactly. If you are an employee, an employer, a freelancer, or, someone running a massive factory, the very foundation of your daily life has just been rewritten. It is a profound shift. And to understand the sheer magnitude of this change, you really have to look at what it replaced. Which was a mess, right? A total mess. For decades, the rules governing how you worked, how you got paid, and how you were protected were scattered across 29 different, highly fragmented rule books. Wow, 29. Yeah. And some of these laws were written before the invention of the microchip. Some directly contradicted each other. They were, frankly, patched up, ignored, and weaponized. So imagine trying to play a high-stakes board game where your opponent is holding a rule book from 1936. And you have one from 1976. Right. And neither applies to the digital board you are actually playing on. That was the compliance landscape. Exactly. But today, our mission on this deep dive is to extract the absolute critical nuggets from the brand new master guide. We're looking at the massive 400-point compliance source document that covers the 4 new labor codes and central rules of 2026. And it's a beast of a document. It is. So we are not just going to list rules. We're going to, rip open the hood and look at the engine of the modern workplace, figuring out exactly how these new gears turn. And if we connect this to the bigger picture, the philosophical shift here is from a world of reactive, paper-based compliance to a digital-first, proactive system. Yeah, it's a huge leap. It's about dragging an archaic system into a hyper-connected economy. We are looking at a complete redefinition of compensation, an aggressive expansion of the social safety net to people who were, previously invisible to the law. Like gig workers. Exactly. Plus a radical update to physical safety and a totally new architecture for how humans negotiate conflict at work. So let's not waste any time. We have to start with the absolute foundation of why any of us show up to work in the first place, which is, obviously, the paycheck. Right, the money. How is money actually defined, regulated, and distributed in 2026? This all falls under the code on wages. Now, historically, just defining what a wage was could require, a team of corporate lawyers. Oh, absolutely, because there were 4 separate laws dictating it. You had the Minimum Wages Act, the Payment of Wages Act, the Bonus Act, and the Equal Remuneration Act. That sounds like a nightmare for HR. It was. An employer could find themselves in a situation where a specific payment was considered a wage under one law, but completely exempt under another. The 2026 code just bulldozes that confusion. It just wipes it out. Yeah, it swallows all 4 of those old laws and creates one unified, undeniable definition of a wage.
And tucked right inside that consolidation is a profoundly aggressive mandate regarding equality. Right, the absolute prohibition of gender-based wage discrimination for similar work. But what caught my eye in the sources isn't just about the paycheck you get while sitting at your desk. The recruiting aspect. Yes, the code makes it unlawful to discriminate on the basis of gender during the recruiting process itself. How does that even work practically? It's tricky. Like if a company uses an algorithmic sorting tool to filter resumes, and that tool inadvertently favors one gender, are they instantly in violation? That is the exact friction point that the new code introduces. Yeah. The law now mandates absolute gender neutrality from the moment a job description is conceptualized and posted. Unless there's a specific exception, right? Right, unless a highly specific, separate law prohibits a certain gender from doing a specific type of hazardous work. But otherwise, the burden of proof has completely shifted. So the employer has to prove they aren't biased. Exactly. If an employer's hiring data shows a massive, unexplainable skew, the inspector-cum-facilitator, which is the new regulatory authority, can demand to look at the recruitment pipeline. Wow. Whether a human or an algorithm discarded a resume, the employer is liable for the systemic bias. It forces companies to audit not just their payroll, but their entire talent acquisition infrastructure. Okay, let's unpack this new unified definition of wages, because this is the specific mechanism causing HR departments across the country to break into a cold sweat. The 50% CTC rule. Yes, the 50% CTC rule. Let me try to visualize this. I like to think of this new definition of wages like packing a suitcase for a long trip. Okay, I like that. You have your core heavy essentials, your jeans and solid shirts. In payroll terms, that's your basic pay, your dearness allowance, your retaining allowance. The foundation. Exactly. Then you have your optional extras, the bulky sweaters and accessories. That's your house rent allowance, your internet reimbursement, your conveyance allowance. Like the new 2026 rule says that your extras, your allowances, absolutely cannot exceed 50% of the total size of your suitcase. And to understand why that suitcase rule is so revolutionary, you have to look at the historical accounting trick it completely eliminates. The CTC game. Exactly. For decades, employers would offer an employee a total package, a cost to company, or a CTC, of, let's say, 100,000 rupees a month. Right. But they would artificially shrink the basic pay down to just 20,000 rupees. They would stuff the remaining 80,000 rupees into various creative allowances. Why go through all that administrative gymnastics, though? Because long-term benefits, specifically the employer's mandatory contribution to your Provident Fund retirement account and your end-of-service gratuity payout, are calculated strictly as a percentage of your basic pay. So keeping that base low saves them money. A fortune. Yeah. By keeping that core basic pay artificially tiny, employers saved an absolute fortune on long-term benefit payouts. They were essentially legally robbing your future retirement to pad their immediate cash flow. Man, that's wild. So, under the new 2026 rule, if an employer tries to stuff 80% of your compensation into allowances, the suitcase bursts. What happens to that excess money? By law, any allowance amount that exceeds 50% of the total remuneration is automatically dumped back into the core wages bucket. Okay, so the math changes instantly. Yes. So in our 100,000 rupee example, the core wage is instantly recalculated to be 50,000 rupees. Wow. The employer must now calculate your Provident Fund and gratuity based on that 50,000, not the old 20,000. Which means the employee builds long-term wealth much faster. But the flip side of that is immediate pain, right? Absolutely. If my PF contribution is suddenly calculated on a much higher base amount, more money is deducted from my monthly paycheck. My immediate take-home pay shrinks. It does shrink, and that is the bitter pill of this structural overhaul. The government has prioritized forced long-term wealth accumulation and Social Security over high immediate liquidity. That's a huge cultural shift. It really is. It forces a cultural shift in how workers view their compensation, shifting the focus from the monthly net deposit to the overall value of the compensation package over a career life cycle. Let's talk about the absolute floor of that compensation. The sources detail a national minimum wage structure, but they introduce this term, a floor wage set by the central government. Right. How does a single floor wage work in a country where the cost of a cup of tea in a Mumbai financial district is like 10 times higher than in a rural village in Bihar? Well, the central government solves this by explicitly allowing the national floor wage to vary by geographic area. Okay, that makes sense.
They categorize the nation into different zones based on exhaustive cost of living data, but the vital mechanism here is the relationship between the central government and the state governments. Because states still have a say. Right. Exactly. States still hold the power to set their own specific minimum wages for various industries. However, the legal absolute is that a state's minimum wage can never, under any circumstances, drop below the central floor wage for that specific geographic zone. And what happens to that wage as inflation inevitably climbs? I mean, does it just sit there losing purchasing power until politicians decide it's popular to raise it? No, the 2026 framework removes a lot of that political foot dragging. It mandates that minimum wages must be reviewed and revised ordinarily every 5 years. That's good. But more importantly, there's the mechanism of the dearness allowance, or DA. Think of DA as the government's mandatory inflation padding. Like an automatic adjustment. Precisely. It is a specific component of the wage that is directly linked to consumer price indices. As the cost of basic goods rises, the DA automatically adjusts upward. So it provides a real-time buffer. Exactly, a mathematical buffer against inflation without requiring a completely new legislative bill. Furthermore, wages are heavily categorized. Like by skill level. Yes. An unskilled worker, a semi-skilled worker, a skilled worker, and a highly skilled worker all have different statutory baselines. And if you are doing hazardous work like underground mining, a mandatory risk premium is bolted onto your minimum wage. So the structure is solid on paper, but I want to inject some reality here. Having a legally mandated wage means absolutely nothing if the employer just delays your payroll by 3 weeks to manage their own corporate debt. Which used to happen all the time. All the time. What are the hard, undeniable deadlines for a worker actually getting their money? The mechanics of the timeline are brutal for employers who try to float their cash on the backs of their workers. If you are a monthly salaried employee, your wages must hit your account by the 7th day of the following month. No exceptions. No exceptions for bank holidays or weekends. The employer must plan ahead. If a worker is on a weekly arrangement, they must be paid on the absolute last working day of that week. Daily wage workers get paid at the end of their shift. And this brings us back to that massive hook we opened the show with, the exit. What if things go south? The company shuts down, you are fired, or you simply hand in your resignation. Under the old regime, leaving a company meant entering a purgatory of full and final settlement, which could take anywhere from 45 to 90 days. Easily. Sometimes longer. The 2026 code completely obliterates that norm. If an employee is dismissed, retrenched, resigns, or becomes unemployed due to a business closure, every single pending wage must be cleared within just 2 working days. That is an incredible logistical strain on an HR department. I mean, if I quit on a Friday afternoon, they have to calculate my prorated salary, my pending leave encashment, sort out my taxes, and process a bank transfer by Tuesday evening. Yes, it requires completely automated real-time payroll software. You can no longer run payroll on a manual spreadsheet. They'd never make the deadline. Never. And this urgency extends to overtime. If a worker is asked to work beyond their normal hours, that overtime must be paid at exactly double the normal wage rate. 2 times, not time and a half. Wow, double time. But what about the other side of the ledger? Deductions. Because if I'm an unscrupulous employer and I have to pay you in 48 hours, I might just invent a bunch of fines. Right, trying to claw back the cash. Exactly. Like, oh, you broke a laptop, you were late 3 times, I'm deducting 50% of your final check. Are there guardrails against that? The guardrails are massive. First, total allowable deductions, and this includes your mandatory taxes, your provident fund, any advances you took, and any fines, can never, combined, exceed 50% of your wages in a given period. So they can't wipe out your whole check. An employer can never send you home with a $0 paycheck. And specifically regarding fines, because that has historically been a tool for workplace bullying. Fines are completely neutered as a weapon. They are strictly capped at 3% of the wage period's pay. 3%, that's tiny. Very tiny. And you cannot impose any fine on a worker under the age of 15. But the most important mechanism is the procedural hurdle. They can't just decree a fine? No. A manager cannot just unilaterally decide to dock your pay because they are angry. They must issue a formal, prior show cause notice to the employee detailing the exact nature of the damage or breach. So the employee gets a chance to defend themselves. Exactly. The employee then has a legally protected opportunity to explain themselves or provide evidence. All approved fines must be logged in a specific government auditable register.
Where does the money go? This is the kicker. The money collected from fines cannot go into the company's profit margin. It can only be used for a fund dedicated to purposes beneficial to the employees, like a recreation room or a medical camp. That's brilliant. It completely destroys the incentive for fines to become a sneaky revenue stream. It essentially makes fining an employee more administrative trouble than it's worth. It really does. Now, let's talk about something everyone looks forward to, but which often feels like a mysterious black box. The annual bonus? Ah, yes. The 2026 framework has highly formalized this, right? It has, but it's important to understand who this applies to. The bonus framework is a protective measure for the lower and middle tiers of the workforce. So not the executives. No. It applies to employees earning up to a prescribed ceiling, which the current rules set at 21,000 rupees per month. Okay. If you fall under that ceiling and you have worked for at least 30 days in the accounting year, you possess a statutory legal entitlement to an annual minimum bonus. Wait, I need to stop you there and push back on this because looking at the sources, this seems economically wild. How so? Well, the law states the minimum bonus is 8.33% of the employee's wages, or 100 rupees, whichever is higher. And this must be paid, even if the company makes absolutely zero profit that year. That's correct. If I'm running a venture-backed tech startup that is deliberately burning cash and operating at a massive loss to gain market share, how on earth does the law justify forcing me to pay an 8.33% profit share when there is literally no profit? Because you have to stop thinking about it as a profit share. This is one of the most misunderstood concepts in Indian labor law. So it's not a performance reward. No. Historically, the minimum wage was often barely enough for basic subsistence. It did not cover major annual life events, festivals, or sudden emergencies. Okay, I'll follow. So the legislature and the courts essentially deemed the minimum 8.33% bonus not as a reward for corporate success, but as a mandatory deferred wage. A deferred wage, that frames it completely differently. It is an acknowledgement that the baseline monthly wage is insufficient for a dignified year-round existence. The only exception the law grants is for newly set up establishments in their first 5 years, provided they truly have no allocable surplus. So it's literally a baked-in cost of doing business. You have to accrue for it from day one. And what if the company is wildly profitable? If the company does have an allocable surplus, which is a legally defined calculation of profit after certain deductions, the employer can be required to pay up to a maximum of 20% of the wages as a bonus. And the timeline is strict, I assume. Very strict. This isn't whenever the board feels generous. The bonus must hit the employee's bank account within 8 months of the close of the accounting year. So we have this incredibly tight web of rules. Wages are redefined, deductions are capped, timelines are brutally fast. But rules are just ink on paper without an enforcer. Exactly. You need someone checking the math. The sources talk about a new role created by the codes, the inspector cum facilitator. That title sounds almost like an oxymoron. How do you inspect and penalize someone while simultaneously facilitating them? The linguistic shift is deeply intentional, and it represents the government's transition away from the inspector Raj. The era of corrupt inspectors. Right, the historical era where labor inspectors were often viewed purely as adversaries, looking for any minor technicality to extract a bribe or launch a punitive prosecution. It was notoriously hostile. It was. The inspector cum facilitator model realizes that a lot of non-compliance, especially among small and medium enterprises, isn't malicious. It's often born of ignorance about complex digital filing systems. So they act as a consultant first and a cop second. Exactly. Their mandate is to run web-based randomized inspections to prevent bias. When they engage an employer, their first duty is to facilitate proper record keeping. Teaching them how to use the system. Right. They provide guidance on how to set up the newly mandated digital wage registers and how to issue proper digital wage slips. And if they find a violation, do they immediately drag the employer into court? This is where the concept of compounding comes in. Compounding, like interest. No, in this context, it's about settling an offense. If an employer makes a minor technical administrative error, say a slight delay in uploading a register, but they are entirely willing to correct the error immediately, they can apply to compound the offense. How does that work? It means they pay a prescribed standard fee to the government, the error is corrected, and the issue is settled completely without initiating a drawn-out, expensive criminal prosecution. That's huge. It incentivizes employers to admit mistakes and fix them voluntarily rather than hiding evidence to avoid going to jail.
Exactly. It's a much more practical approach to compliance. All right, so we've established that employers can no longer legally mess with your take-home pay. They can't hide behind accounting tricks. And they have to settle up in 48 hours. The foundation is secure. Right. But a paycheck only matters if you're actually capable of working. Yeah. If you get hurt on the job tomorrow, or if you need to step away for 6 months to have a child, or if you simply reach the age where your body can't do the heavy lifting anymore, high daily wages do not protect you. They do not. That brings us to the biggest philosophical shift in these documents, the safety net. We are moving from the code on wages to the code on Social Security. And this code is arguably the most ambitious undertaking in the entire 2026 framework. Because it replaces so much. Yes. It systematically dismantles and replaces 9 massive legacy laws, including the Employees Provident Fund Act, the ESI Act, the Gratuity Act, and the Maternity Benefit Act. That's a massive consolidation. But its true legacy isn't what it replaces. It's who it invites into the tent for the very first time. Okay, here's where it gets really interesting. The single biggest headline out of the Social Security Code is the aggressive expansion to cover unorganized workers, gig workers, and platform workers. Millions of people. Right. We are talking about the millions of people who drive for rideshare apps, who deliver your groceries on a scooter in the rain, the freelance coders operating through gig platforms. Historically, these people were completely invisible to labor laws. Completely invisible, because the apps insisted they aren't our employees, they are just independent users of our software. And that legal fiction allowed aggregator platforms to scale into multi-billion-dollar valuations without carrying any of the traditional burdens of an employer. Absolutely zero burden. If a food delivery driver got hit by a car, the platform had zero legal obligation to pay for their hospital bill or support their family. It was pretty dystopian when you think about it. It was a massive loophole. The 2026 code fundamentally breaks that firewall. It forces aggregators to recognize their economic responsibility to the human beings powering their algorithms. But how does the mechanism actually work? Because the traditional safety net, the Provident Fund, is built on deducting a steady percentage from a predictable monthly salary. Right, which gig workers don't have. Exactly. A gig worker might make 2,000 rupees one week and zero the next. An aggregator can't run a standard HR payroll for 1 million decentralized freelancers. Which is exactly why the government didn't try to force a square peg into a round hole. They created a completely novel mechanism. How novel. Instead of tracking individual worker deductions, the law mandates that aggregators contribute a macro-level percentage between 1% and 2% of their total annual turnover directly into a newly established central social security fund for gig and platform workers. Oh, wow. So it's tied to the company's gross revenue, not the individual's micro-earnings. Exactly. This effectively acts as a massive pooled insurance fund. So a tiny fraction of every single ride you take or every meal you order goes into this central vault. And how does the worker actually access it? They don't have an HR rep to give them forms? The code pioneers a self-registration mechanism. Gig workers can log on to official Aadhaar-linked government portals and register themselves as platform workers. That's empowering. They bypass the traditional gatekeeper requirement of an employer having to enroll them. Once registered, they gain access to schemes funded by that central vault, which can include life and disability cover, health benefits, and even old age protection. It empowers the worker to claim their visibility in the system. That is a staggering leap forward for the decentralized economy. It sets a global precedent, really. But for the traditional formalized workforce, the people walking into an office or a factory, how do the thresholds work for the classic safety nets? I'm talking about the EPF and the ESIC. The baseline numbers are strict and unyielding. The Employee Provident Fund, or EPF, becomes an absolute mandatory requirement for any establishment employing 20 or more people. 20 people, okay. The standard contribution rate is 12% from the employer and a matching 12% from the employee, calculated on those newly defined baseline wages we talked about earlier. Right, the 50% suitcase rule wages. Yes. And then there's the Employee State Insurance Corporation, or ESIC, which is the system that handles immediate health, sickness, and localized medical infrastructure. That kicks in even earlier. It becomes mandatory the moment a business hits 10 employees. Let's break down the mechanics of that 12% employer contribution to the EPF. Because a lot of people look at their pay slip, see the 12% deduction, see the matching 12% from the employer, and assume 24% is just sitting in a massive savings account collecting interest. It's a common misconception, but it's actually a multi-layered financial vehicle. Right. Break that down for us.
Understanding this mechanism is crucial for long-term financial planning. The employee's entire 12% goes straight into the main Provident Fund corpus, which accrues compound interest. So my money stays whole. Yes, but the employer's 12% is legally fractured. Out of that 12%, a significant chunk, 8.33%, is automatically diverted into the employee pension scheme, or EPS. So this is what funds the traditional monthly pension upon retirement at age 58. Exactly. It pools risk to guarantee a defined monthly payout late in life. But the most overlooked mechanism is what the employer has to pay on top of the 12%. Wait, there's more. Yes. Employers are mandated to pay a premium into the EDLI scheme, the Employees Deposit-Linked Insurance. What does that do? Think of EDLI as a mandatory life insurance wrapper built around your retirement account. If an employee tragically dies while in active service, regardless of the cause, the EDLI scheme guarantees a lump sum payment directly to their nominee, completely separate from the accumulated PF balance. That's incredible. How much is the payout? Under current rules, this can reach a maximum of 700,000 rupees. So by simply being on a compliant payroll, an employee is simultaneously building liquid retirement wealth, securing a future monthly pension, and carrying an active life insurance policy. It's a very robust safety net. But this entire beautiful machine relies on the employer actually transferring the money. Yes, it does. What happens if a startup hits a rough patch, cash flow dries up, and the founder decides to just, delay depositing the PF money for 6 months to make payroll? They're effectively giving themselves an unauthorized zero-interest loan from their employees' retirement funds. And that is exactly why the penalties for EPF default are arguably the most draconian in the entire labor framework. Yeah. What are the penalties? If an employer delays a contribution, they are immediately hit with a mandatory 12% interest per annum on the delayed amount under Section 7Q. Okay, 12% interest. That hurts. But that is just the cost of capital. The punitive hammer falls under Section 14B. The regulatory authority can impose damages that scale aggressively based on the duration of the delay, capping out at a staggering 37% of the total arrears. Wait, 37% is a pure penalty? Yes. So if they delayed 1 million rupees, they owe the million plus 12% interest plus a 370,000 rupee fine. Yes. And the critical mechanism of the law states that this penalty must be absorbed entirely by the employer. They cannot claw it back by reducing the employee's future wages or bonuses. Wow. It is designed to make raiding the PF fund the absolute most expensive, financially destructive way a company can attempt to manage its cash flow. That is a serious deterrent. Let's transition to another pillar of long-term wealth, gratuity. Yes, the loyalty bonus. Right. The historical mechanism for gratuity is deeply tied to loyalty. You stay with a company through thick and thin, and when you finally retire or move on after a decade, you get a massive lump sum reward. The standard rule reflects that loyalty concept perfectly. For a permanent employee, gratuity entitlement unlocks only after they complete 5 continuous years of service. 5 years is a long time in today's economy. It is. Once they cross that threshold upon exit, the calculation is essentially 15 days of wages for every single completed year of service, currently capped at a maximum payout of 2 million rupees. But the 2026 framework looks at the modern economy, realizes nobody stays at a job for 5 years anymore, and introduces a massive disruption regarding fixed-term employment, or FTEs. This is a profound structural shift. A fixed-term employee is someone hired on a specific time-bound contract, say, a highly skilled engineer brought in for a 2-year infrastructure project. Okay. Under the old 5-year rule, these workers, who increasingly make up the bulk of the modern talent pool, were structurally locked out of gratuity. They could work back-to-back 2-year contracts for a decade and accumulate 0 gratuity wealth. That's incredibly unfair. The new code changes the math entirely. For an FTE worker, the gratuity requirement kicks in after just 1 single year of continuous service. So if I finish my 1-year contract, I am legally owed 15 days of wages as gratuity upon exit. Correct. They get paid proportionately for the exact time they served. It completely changes the financial viability of contract work, ensuring that mobility doesn't equal poverty in retirement. That is a massive win for gig and contract workers. Now let's look at a different type of vital safety net: maternity and family benefits. This is an area where, historically, India has actually drafted some of the most progressive protections in the world. Very progressive, yes. How does the new code handle the reality of working mothers? The coverage is broad.
The maternity benefit provisions automatically apply to any establishment with 10 or more workers operating completely independently of whether the establishment is covered under the ESIC health system. So it's universal at 10 employees. Yes. The core mechanism guarantees 26 weeks of fully paid maternity leave for the birth of the first 2 children. 26 weeks. That's over 6 months. It's substantial. Now, if a woman is having her 3rd child, or if she is legally adopting a child below the age of 3 months, or if she is a commissioning mother in a surrogacy arrangement, the law guarantees 12 weeks of fully paid leave. And the financial mechanism here is critical. The employer cannot deduct any wages, and they cannot use the pregnancy as grounds for dismissal. Absolutely forbidden. Furthermore, a mother has the right to apply for this leave up to 8 weeks before her expected delivery date, and the employer is legally obligated to process the advanced maternity pay within 3 days. It ensures she has capital right when she needs it most. But a safety net can't just evaporate the moment the 26 weeks are over. Returning to work is often the hardest part. What physical infrastructure is mandated to support that return? This is where Social Security blends with physical workplace compliance. If an establishment employs 50 or more people, and note, that is 50 employees total, not 50 female employees, providing a dedicated creche facility is an absolute mandate. And a creche can't just be an empty supply closet with a rug thrown on the floor, right? Oh, not at all. The regulations are intensely specific. The facility must provide a minimum of 3.5 square feet of floor space per child. Wow, they actually measure the square footage. Yes. It mandates qualified caretakers, age-appropriate educational toys, and rigorous daily sanitation protocols. That's a full-on daycare. Essentially, yes. Furthermore, a returning mother is legally entitled to visit the creche for 2 dedicated nursing breaks during her normal working hours every single day until the child reaches 15 months of age. And her pay. The mechanism of the law states that the employer cannot deduct any wages for the time spent taking these nursing breaks. That is incredibly robust. Finally, to close out the Social Security pillar, we have to talk about the absolute worst-case scenario. When the safety net isn't catching a life event, but a tragedy. Workplace compensation. It's a grim reality, but a necessary protection. If a worker suffers an injury or contracts a long-term occupational disease that results in disability or death, employer-funded compensation is strictly mandatory. How do they calculate that? Sounds complicated. The law removes ambiguity by enforcing strict mathematical formulas. In the catastrophic event of a worker's death due to an occupational hazard, the compensation mandated is 50% of the worker's monthly wages multiplied by a specific factor linked to their age. Linked to their age. Why? Because a 25-year-old dying loses more future earning potential than a 60-year-old. That makes a cold mathematical kind of sense. Exactly. So it's that formula, or a hard statutory minimum of 120,000 rupees, whichever results in the higher payout. What about severe injuries? For permanent total disablement, say losing the use of both hands, the formula bumps to 60% of monthly wages multiplied by the age factor, with a minimum of 140,000 rupees. And for industries where the inherent risk is just astronomically high, the sources spend a lot of time on construction work. You have millions of transient, vulnerable laborers building high-rises. Does the standard mechanism cover them? The code recognizes that standard compliance often fails transient workers. They move around too much. So it uses the BOS-CW mechanism, the building and other construction workers provision. How does that work differently? It bypasses individual worker tracking and goes straight to the capital. Any employer or primary contractor undertaking construction must pay a mandatory 1%, essentially a specialized tax calculated on the total overall cost of the entire construction project. Wait. 1% of the whole project cost. So if a developer is building a $1 billion skyscraper, 10 million rupees goes straight to the government. It goes directly into a dedicated welfare fund managed by a statutory cess officer. That massive pool of capital is then deployed specifically for the welfare, emergency health response, and safety infrastructure of construction workers across the state. It taxes the footprint of the building to protect the hands that build it. That's a powerful concept. It's one of the most effective ways to fund localized Social Security. So we've secured the paycheck, and we've built a massive, mathematically sound safety net underneath the worker for when life happens. But what about the day-to-day, minute-by-minute physical reality of stepping onto a factory floor, descending into a mine, or walking into a sprawling corporate office? The physical environment. Right. This brings us to the third pillar. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, or OSH,
and its 2026 rules. The sheer scope of the OSH code is staggering. It takes 13 completely disparate, historically siloed laws that individually govern factories, mines, tea plantations, dock workers, and journalists, and fuses them into a single, comprehensive baseline for physical human safety. Let's start with the baseline of human endurance. Yeah. Before we talk about hard hats and fire exits, what is the legal definition of a workday now? Because burnout is absolutely a physical safety issue. The absolute legal ceiling for an adult worker is 8 hours a day and 48 hours a week. And within those 8 hours, an employer cannot treat a human like an uninterrupted machine. They need breaks. Yes. The mechanism requires a mandatory half-hour rest break to be inserted before any worker completes 5 continuous hours of work. And looking at the broader calendar, every single worker is entitled to 1 mandatory day of rest in every 7-day cycle. But factories get massive rush orders. Tech companies have crunch periods before a launch. If they need people to work past 8 hours, the overtime kicks in at double pay, as we established earlier. Right, the 2x overtime. But is there a limit to how much double pay they can throw at someone? Like, can they mandate 16-hour days for a month straight just by paying them double? No, because money doesn't prevent physical exhaustion and eventual accidents. The code strictly caps overtime at 100 hours per quarter for most sectors. 100 hours per quarter. Yes. Yeah. Once an employee hits that 100-hour ceiling, it is illegal for the employer to allow them to work overtime, regardless of how much double pay is offered. That's a hard stop on burnout. It is. As for long-term rest, workers in factories and mines accrue 1 day of paid annual leave for every 20 days they work. They possess the statutory right to carry forward unavailed earned leave into the next year up to a prescribed limit. And if they leave the company? Crucially, if they are terminated or resign, the employer must encash that accrued leave. They cannot just wipe the internal ledger clean. Okay, let's unpack the health and safety checks. I like to compare operating a heavy manufacturing plant or a chemical refinery to operating a commercial airline. That's a good analogy. An airline can't just put passengers in the cabin and tell the pilot to hit the gas and hope the engines work. There is a massive, strictly regulated pre-flight diagnostic check. That analogy perfectly captures the responsibility of the occupier. The occupier. Under this code, the occupier is the specific individual who has ultimate legal control over the affairs of the factory. They cannot operate blindly. For any employee engaged in hazardous work, the occupier is mandated to arrange extensive baseline medical examinations before the employee is even allowed to start their first shift. So a pre-flight check on the human body. Exactly. They must conduct periodic annual checks to monitor for gradual occupational degradation and post-exposure diagnostics if an incident occurs. Every single blood test, every audiogram must be logged in a prescribed state-auditable health register. And the day-to-day physical amenities within the workplace, are they the same for a 20-person workshop as they are for a 5,000-person auto plant? The law uses a proportional mechanism. The requirements scale aggressively based on the head count. Give us some examples. For example, the moment a facility employs 250 or more workers, providing a fully functional subsidized canteen is no longer optional, it is mandatory. And the nutritional value and pricing of the food must be overseen by a worker-represented canteen managing committee. What if it gets even bigger? If the head count crosses 500, the company must hire a legally qualified welfare officer whose sole job is to monitor these systems. Wow. Across every single tier, providing separate, secure restrooms for women is universally mandatory. And for emergency response. Hit 150 workers, you need rigorously stocked prescribed first aid stations. Hit 500 workers, and you are legally required to build and staff a dedicated ambulance room right on the premises. Now, regarding women in the workplace, there is a major modernization in this code. For decades, protective legislation in India actually severely hindered women's earning potential by creating a blanket ban on them working night shifts or working in heavy industrial processes. Yes, the legacy approach was deeply paternalistic. The law said, it's dangerous, so women can't do it. Which locked them out of a lot of high-paying jobs. Exactly. The new framework recognizes that protection shouldn't mean economic exclusion.
Under the 2026 rules, women are legally permitted to work night shifts, and they can even be employed in hazardous processes. But the mechanism ensures this isn't just a loophole for cheap labor, right? Correct. The compliance burden is shifted entirely onto the employer. A woman cannot be forced into a night shift. It requires her explicit, documented written consent. Okay, that's crucial. Furthermore, the employer is legally obligated to provide secure, dedicated transport from the workplace directly to her home doorstep. They must implement specific safety escorts and lighting protocols. So they have to pay for the safety. Exactly. If an employer wants the benefit of a female workforce operating 24/7, they must pay the premium to guarantee their absolute physical safety. I want to push back on something that has plagued industrial safety for over a century: the cover-up. Ah, yes, the hidden accidents. Let's say an employer is running a massive chemical processing plant. A valve fails. There's a near miss, or a worker is exposed to a hazardous airborne substance. Nobody dies immediately, and the worker just goes home feeling sick. Can the employer just sweep that under the rug, fix the valve quietly, and avoid drawing the attention of an inspector? The code is designed specifically to pierce that exact veil of silence. The 2026 rules enforce absolute zero tolerance for delayed or suppressed reporting, and the timelines are brutally tight. How tight? If there is a fatal accident, the occupier cannot wait to call their lawyers. They must make an immediate telephonic report to the inspector-cum-facilitator, followed by a deeply detailed formal written report within 24 hours. And for non-fatal accidents? If it is a serious non-fatal accident, say a severed limb or a structural collapse, the written report must be filed within 48 hours. But what about the slow tragedies, the chemical exposure you don't see on day one? To address that, the code includes a highly specific third schedule, which lists dozens of notifiable occupational diseases, ranging from silicosis to complex chemical poisonings. Okay. If a medical officer suspects a worker has contracted one of these, or if a worker is exposed in a way that risks it, the employer is legally mandated to report the incident to both the regulatory inspector and the ESIC health authorities within 3 days. And if an employer calculates that the fine for hiding the incident is cheaper than the cost of a massive safety overhaul, what are the actual teeth of this law? The financial calculus of cover-ups no longer works. A first-time occupational safety violation carries a baseline fine of 200,000 rupees. That's a start. If they are caught repeating the offense, the fine jumps to 300,000 rupees and crucially introduces the potential for imprisonment of the occupier. Jail time changes the math. It does, but the ultimate deterrent is this. If an employer's documented negligence in safety compliance directly leads to a worker's death, they are no longer just dealing with labor fines. They are facing direct criminal liability under the penal code. So it's manslaughter. Effectively, yes. Human life is no longer treated as an expendable cost of doing business. What about the invisible workforce, the contractors and the migrant workers, who often fall through the cracks because the company whose logo is on the building claims they don't technically employ them? The outsourcing defense. Exactly. Let's say I'm a massive multinational e-commerce brand, the principal employer. I own the warehouse, but I completely outsource my floor labor to a third-party cut-rate contractor. Okay. If that contractor cuts corners on safety gear and someone gets hurt, can my multinational brand just wash its hands and say, talk to the contractor? The code explicitly and aggressively closes the washed hands loophole. The law states that the principal employer is held jointly and severally liable for the safety and welfare of every single contract worker stepping onto their premises. So I can't just look the other way. No! You must maintain an exhaustive digital register of all contract workers deployed. If your chosen third-party contractor fails to provide a mandatory canteen or defaults on providing essential safety gear, the legal mechanism forces the principal employer to step in. To fix it themselves? Yes. You have to purchase the gear, provide the facility, and then you can recover the cost from the contractor later. You cannot outsource your moral and legal liability. And regarding interstate migrant workers, people traveling thousands of miles from rural states to work in urban centers. They are granted highly specific protections. Employers and contractors must maintain rigorous tracking registers for them, but financially the mechanism demands respect for their displacement. How so? These workers are legally entitled to journey allowances to cover their rail or bus travel from their home state to the job site. Furthermore, upon being placed, they must receive a lump sum displacement allowance to help them establish basic housing. That's fantastic. The era of treating migrant workers as cheap, disposable, untraceable labor is legally over.
That is the intent of the law, yes. So we've built the theoretical perfect workplace. The pay is fair and protected, the social safety net is incredibly wide, the physical environment is highly regulated and accountable. But as we all know, humans are involved. And humans are messy. Right. Which means disagreements, friction, misunderstandings, and systemic conflict are absolutely inevitable. How does the 2026 framework handle the messy reality of strikes, mass layoffs, and hard-knuckle negotiations? It's a critical piece of the puzzle. This brings us to the final piece of our deep dive, the Industrial Relations Code and its 2026 rules. The IR Code is the amalgamation of the Trade Unions Act, the Industrial Employment Act, which handles standing orders, and the notoriously complex Industrial Disputes Act. So it's the Conflict Resolution Master Plan. Exactly. Its entire architectural purpose is to act as a pressure valve. It provides a highly structured, predictable, mathematical pathway for resolving conflict between labor and management before that conflict destroys the business. And it starts by completely redefining who even gets a seat at the negotiating table. The definition of a worker has been broadened significantly. It has. It obviously includes manual, unskilled, skilled, technical, operational, and clerical staff. But notably, the mechanism now includes supervisory workers, provided their monthly wages don't exceed a specific ceiling. Which is currently set at 15,000 rupees per month. Yes. And we must bring up the concept of fixed-term employment, or FTE, one more time here, because the Industrial Relations Code deeply formalizes the power of the FTE contract. Right, the parity we talked about earlier. It mandates that every FTE arrangement must be a highly detailed written contract where the exact duration, the specific work description, and the wages are explicitly laid out. But the most powerful mechanism is the parity clause. Meaning they have to be treated exactly like permanent staff. An FTE worker must legally receive the exact same wages, the exact same leave entitlements, and proportionate statutory benefits as a permanent worker sitting right next to them doing the exact same job. I love this mechanism because it essentially eradicates the concept of treating contract workers as a second-class workforce. It removes the financial incentive to exploit them. Exactly. If I am running a company, I can't just fire my permanent staff and hire FTEs to undercut the wage bill. The hourly cost is identical. The only thing I gain is temporal flexibility. Spot on. Okay, let's talk about how these workers actually organize to fight for their rights. Trade unions. What's fascinating here is the new math of trade unions. Historically, industrial relations in India could be chaotic because you could have 20 micro-unions in one factory all screaming over each other, making negotiation impossible. A completely fractured voice. Right. Yeah. The code uses very precise numerical thresholds to enforce order. To simply register a new trade union, the mechanism requires a minimum of 7 workers to subscribe to the application. That's easy enough? But to survive, the union must continuously maintain a verified membership of at least 10% of the total workers in the establishment, or a minimum of 7, whichever is higher. But registering a union and printing some flyers is one thing. Forcing the CEO to sit across a table and actually negotiate with you is another. How does a union prove they have the mandate to speak for the workforce? Through a highly formalized government-overseen verification process, which often involves a secret ballot. If a registered trade union can prove mathematically that it has 51% or more of the workers as verified members, it is legally granted the status of the sole negotiating union. Meaning the employer is legally forbidden from negotiating side deals with anyone else. That union speaks for the entire factory. Precisely. But what if the workforce is deeply fractured? What if there are 4 different fiercely loyal unions and nobody can hit that magic 51% majority? Does management just get to ignore all of them? Not at all. In that scenario, the code mandates a mechanism that works very much like a parliamentary coalition. It forces the formation of a negotiating council. A council. How does a union get a seat on that? Any individual union that holds at least 20% of the worker membership gets a proportional seat on this council. The employer is then legally mandated to engage in collective bargaining with the council as a single entity. This is brilliant because it prevents a tiny 5% fringe union from holding a factory hostage with wild demands while ensuring that any union representing a significant 20% minority voice
cannot be silenced by management. Exactly. It balances the power. Once formed, this negotiating status, whether a sole union or a council, is locked in and valid for 3 years, bringing much-needed stability to the factory floor. That brings a huge amount of predictability to macro-level negotiations. Now let's zoom in on the micro level, the day-to-day rules of simply existing in the workplace. The sources refer repeatedly to standing orders. I like to think of these as the certified house rules. House rules is exactly what they are. Standing orders are the legally binding documents that dictate the terms of employment. How exactly shifts are organized, the strict protocols for how leave is requested and granted, what specifically constitutes minor versus gross misconduct, and the exact procedures for termination. And these are mandatory. Under the new code, drafting these standing orders is mandatory for any industrial establishment employing 300 or more workers. But a CEO can't just type up a draconian list of rules like 5 minutes late equals termination, pinned to the break room wall and call it a standing order, right? Absolutely not. The mechanism prevents unilateral dictatorship. The employer must submit a draft of their proposed standing orders to a government-appointed certifying officer. And the officer audits it. The officer initiates a 70-day review period. They cross-reference the draft against the law, suggest mandatory modifications to ensure fairness, and only then formally certify them. So they have a legal seal of approval. Yes. Once certified, these house rules must be displayed prominently at the entrance of the workplace, in both English and the local language spoken by the majority of the workers. And if the employer decides they want to change the rules later to introduce, say, a night shift. Any major modification requires a strict 21-day advance notice to the workers, allowing them time to raise objections, and the change must go through the certification process all over again. That prevents sudden rug pulls. And for smaller establishments with fewer than 300 workers, the law doesn't leave them in chaos. The central government issues model standing orders that automatically apply by default, ensuring nobody is operating without a fair, standardized rulebook. So everyone knows the rules and everyone has a voice. But what happens when the pressure valve fails? When negotiations completely break down? Let's talk about the nuclear options, strikes and lockouts. The big ones. If workers at a water treatment plant or a mass transit system are furious, can they just drop their tools and walk out at noon? Or conversely, if an employer is bleeding cash, can they just chain the factory gates shut overnight? The short answer is unequivocally no. The code is engineered to prevent sudden, paralyzing, unannounced shocks to the economic system, particularly in public utility services, things like power plants, transit, and hospitals. A 13-day advance written notice is strictly legally mandatory before a strike can commence. And lockouts. The exact same 14-day notice requirement applies to an employer initiating a lockout. And what is the mechanism behind that 14 days? Why that specific number? Because the moment that notice is filed, the government's conciliation machinery automatically kicks into gear. Those 14 days are a legally enforced cooling-off period where neutral mediators scramble to resolve the issue before economic destruction occurs. So they freeze everything. During that 14-day window, any strike or lockout action is strictly illegal. And if a group of workers or an angry CEO ignores the notice period and initiates action anyway, then the action is legally classified as an illegal strike or illegal lockout. This classification is devastating. Participating in an illegal strike strips the worker of their protections. It is deemed gross misconduct and carries severe penalties, starting with a minimum 10,000 rupee fine. ouch. And the employer. Conversely, an employer executing an illegal lockout faces massive financial penalties and will be ordered by a tribunal to pay full wage compensation to every single worker they illegally locked out. Speaking of lockouts and pausing work, let's talk about the grim reality of layoffs and retrenchment. Sometimes a company simply cannot afford its workforce due to macroeconomic factors. But they can't just fire 500 people via a mass email, right? The rules are heavily tiered based on the size of the establishment, and they differentiate between a temporary pause and a permanent cut. Let's look at layoffs first. In this specific legal context, a layoff means the employer is temporarily unable to provide work. Perhaps the supply chain broke down and they have no raw materials, or the power grid failed. If an establishment has 50 or more workers, strict layoff provisions apply. What are those provisions? The employer must give formal notice, and crucially, they are legally required to pay the laid-off workers 50% of their basic wages plus DA as compensation for every single day they are told to stay home. It prevents the employer from hoarding a workforce without paying them. But what about permanent downsizing, retrenchment, or the complete permanent closure of the business?
The mechanism here is designed to prevent catastrophic localized unemployment. If an establishment employs 100 or more workers, the employer cannot legally retrench workers or close the factory without seeking prior formal permission from the appropriate government authority. They literally need government permission to close. They have to prove the economic necessity. For a full closure, a 60-day advance notice is required. For retrenchment downsizing the workforce, a 90-day notice is needed. And what is the financial landing pad for the workers who lose their livelihood through no fault of their own? In both retrenchment and closure, the mandatory statutory compensation is 15 days of average pay for every single completed year of continuous service. And who gets cut first? Furthermore, retrenchment must strictly follow the last-in, first-out mechanism. You must let go of the newest hires first. An employer cannot use economic downsizing as a convenient excuse to selectively target and fire highly paid senior employees to save money. It provides an incredibly structured, predictable landing pad for the workforce. Now, let's look at the absolute final piece of the puzzle: dispute resolution for the individual. The individual worker. Let's step away from unions and mass layoffs. Let's say a single individual worker is accused of gross misconduct, maybe stealing equipment or severely assaulting a manager. Can the supervisor just yell, "You're fired, call security," and throw them out the front door? Absolutely not. This is where the profound legal concept of natural justice is rigorously enforced on the factory floor. To dismiss a worker for misconduct, the employer cannot act as judge, jury, and executioner in 5 minutes. They must conduct a proper domestic inquiry. What does a domestic inquiry actually look like in practice? It is essentially a formal internal due process trial. The employer must first issue a detailed written show cause notice, explicitly outlining the exact charges and the evidence. The worker must be given a minimum of 7 days to process the charges and respond. So they have a week just to formulate a reply. Yes, an objective inquiry officer, often an external lawyer, must be appointed. During the inquiry hearings, the worker must be given a fair opportunity to cross-examine witnesses, present their own defense, and even bring in a union representative to assist them. It really is a mini trial. Only after this exhaustive process concludes and the officer finds them guilty can a written, reasoned order of dismissal be passed. But this process could take months. What happens to the worker while this internal trial is going on? They're presumably suspended, but they can't just be starved out of their legal defense. Right. The code anticipates that exact power imbalance. If a worker is suspended pending a domestic inquiry, the employer is legally obligated to pay them a subsistence allowance. For the first 90 days of the suspension, the employer must pay the worker 50% of their normal wages while they sit at home. And if the employer intentionally drags their feet to bankrupt the worker? The mechanism punishes delay. If the internal inquiry drags on beyond 90 days and the delay is not the worker's fault, that subsistence allowance automatically increases to 75% of their wages. Oh, wow. This ensures the employer has a massive, burning financial incentive to conduct the inquiry swiftly, fairly, and decisively. And if the dispute isn't an internal disciplinary issue, what if it's a massive, unresolvable clash between the 51% sole negotiating union and the management over next year's wages? That's where the formal government conciliation process steps in. The government appoints a conciliation officer who acts as a legally empowered, neutral mediator. There is a specific 14-day conciliation window where this officer summons both parties, listens to the grievances, reviews the financials, and attempts to draft a mutually agreeable settlement. And if it just completely fails? If conciliation fails completely, the officer writes a formal failure report. The dispute then escalates out of the company and into an industrial tribunal, which is presided over by a judicial officer with the experience of a high court judge. The tribunal runs a formal legal proceeding, and their eventual award is legally binding on both the union and the employer. Okay, let's unpack this. So what does this all mean? If we step back and look at the massive terrain we just covered over the last hour, we went from the definition of a single rupee in a paycheck all the way to a high court judge mediating a factory strike. It's a vast landscape. The 2026 codes took decades of tangled, contradictory, paper-based compliance and ran it through a ruthless modernizer. It did. And the ultimate takeaway for the listener is that this framework fundamentally forces HR departments and company leadership to change their entire operational psychology. No more winging it. You can no longer hide a dusty, manually penciled register in a filing cabinet and hope the inspector doesn't ask for it.
The system now demands proactive quarterly audits, digital-first portals, and rigorous self-assessments. Because the penalties are too high. It forces a culture of absolute, verifiable compliance because the mechanisms of penalty, from 37% damages on PF defaults to 12% interest on late wages to literal criminal liability for safety failures, are simply too destructive to ignore. It creates a baseline of absolute dignity, mathematical predictability, and physical safety for the worker, while providing a streamlined, consolidated, and logical rulebook for the employer. You know the rules of the game before you sit down to play. It does. But as we analyze these sources, this raises an important question, something for our listeners to deeply ponder as they navigate this new reality. What's that? The 2026 codes successfully pulled off a minor miracle by formalizing the gig economy. They forced tech aggregators to pay 1% to 2% into a social security fund, acknowledging the humanity of the platform worker. Right. But as we move deeper into a hyper-decentralized, AI-driven economy where work is atomized across global autonomous networks, Things are getting wild. will the line between employee, contractor, and platform worker blur so entirely that this massive, exhaustive, four-code system will eventually feel incomplete? Will we, in another decade, be sitting here discussing the urgent need for a fifth code? That is a genuinely fascinating thought to chew on. As algorithms get smarter and corporate structures get more decentralized, how do you regulate a workplace that only exists in the cloud? Something to keep a very close eye on as the future of work continues to rapidly unfold. Absolutely. And that brings us to the end of our journey today. Thank you for joining us on this extensive, deep dive exploration of the rules that govern the very foundation of our working lives. Remember that high-stakes board game we talked about at the start? The one with the 29 scattered rule books. Right. Well, the game is still high stakes, the economy is still moving at light speed, but at least now, everyone, from the newest gig worker to the oldest CEO, is finally playing by the exact same single master guide.